Good morning, good morning, good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Okay. One second. Yeah, good morning. Good morning, everyone. Sorry. So today, a lot of things about auto companies. So I think there is a news on Ashok Leyland. There is a news on Renault, who is planning to scale up in India. There is a news on EV seven-seaters, which is growing up in India, and one is on the CAFE norms. So CAFE norms was a big news, which will impact most of the auto companies, which says that it will be from 2027. They have said that they should either reduce the emission or buy some credits. So Mahindra and Tata Motors have said that they will buy credits from selling more EVs, whereas Maruti do not have that kind of credit. So they need to reduce the that content, so the emission content from that. But Maruti has said that the small cars should be exempt. So these things are going on. While some automakers have different views on the latest draft. So majorly now, I'm not saying what things will happen in the future. Auto sector is up today. There is nothing, there's no impact as such on this stock. But yes, it will improve, it will increase the pricing of the car. So somehow it is expected that the car's demand might decrease. Guys, I will tell you, because of this IT disruption which is happening in India, job losses, Oracle loss, then TCS, you saw a shocking case of TCS. In that, this can lead to reduction in your, I would say, purchasing power. Okay, so cars will get impacted. The cars will not means the entry level cars might get impacted. So I am little bearish on the Maruti now, because the things are not looking favorable for the company. Mahindra is doing good. Even sorry, Maruti and Tata Motors, again, I will say there will be some kind of softness. You have to look at the trend, but Maruti is growing on the export side. As an export, I don't like to comment more on it because it's hardly contribute 10% of total volumes. So, and I don't understand what is the how the export market works, but it is growing on in the export. But on the domestic front, yes, there can be some kind of issues after 2027. So 27 तक क्या होता है, अप्रैल 27 तक प्री बाइंग होती है. इवन वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स बॉट अ कार जस्ट बिकॉज टू टेक द बेनिफिट. तो कुछ प्राइस हाइक हो रहे थे, उसका बेनिफिट लेने के पहले वो लोग ने कर लिया. सो ये यूजुअली प्री बाइंग होती है. तो यू माइट सी गुड नंबर्स नाउ, बट हमेशा मार्केट ऑलवेज वैल्यू यू 1 ईयर फॉरवर्ड. तो ये याद रखो कि हमेशा अगर कोई एक साल बाद जो चीज होने वाली है उसका इम्पैक्ट आज ही आएगा, भले वो सेल्स अच्छे क्यों ना आए. अभी कल था कि ऑटोमोबाइल रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर सेल्स. फाइन, वो हो गया. नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर. ओके. So Karthik has written on cafe norms. Karthik? Yes, sir. Good morning, sir. Good Karthik morning, is on everyone. stage. So Yeah, yeah. today's news Good is morning. regarding CAFE 3 norms, where automakers have backed CAFE 3 norms, which will be implementing from March 2027, where requiring annual CO2 reduction till FY 2023, FY 32, where currently it is around 113 gram per kilometer, which will be reduced to 77 grams per kilometer by FY 32, which is a 32% tightening applied at fleet level across portfolio, whereas draft has removed sub 909 kg carve out, but adjust emission slope to favor lighter vehicles, while tightening norms for the heavier SUVs, where EV carries around 2 to 3x super points, emitting car makers to offset its ICE emission, which will be costing you around like 20K to 50K unit per unit. Whereas in that maximum loss will be coming from Tata Motors as well as Mahindra and Mahindra. So Tata Motors is scaling its EV market, where they will be reaching to 70 to 90K units annually for EV, and using their EV mix to offset its fleet emission, while Mahindra and Mahindra is accelerating its EV transition with doing a capex of 160 billion rupees of capex, launching seven EVs in the future by FY 31, and making its EV mix of total or portfolio of 20% in FY 27.
Whereas despite the ramp up of 7K units per EV on the total sales currently and Igloo platform outroll, Tata is still heavy on the SUV, and it is expected that there will be 50 billion rupees of penalty if they will be unable to meet the norms. Whereas I would like to conclude it by saying that Cafe 3 norm accelerate the EV lead, where it is highly beneficial for Tata Motors and Maruti, as Maruti generally operates in the small cars which are hatchback and sedans, and Tata is still a market leader in the EV industry, so there will be less impact, but Maruti will be having a massive impact. Yes. So it will be bad for the company. One thing I'd like to highlight that 2 weeks ago there was a news regarding Cafe 2 norms that they have reduced their penalty by 65%. So it is showing that there is a chance of improvement in future as well, where the no, where the penalty will be reduced. Thank you. Okay. Okay. Fine. Same thing. So, Abhishek, anything on Maruti? Oh, I think Karthik also have written, but Abhishek, would you like to say? Discontinuation of Yes, weakness? sir. Yeah. Good morning, sir. Good morning, everyone. So the news today is regarding Maruti, and Maruti has discontinued its Ignis model after 8 years, which was launched in 2017. So, and in this FY26, average sales only was 30,000 units out of 24 lakh units that Maruti Suzuki has sold in the whole year. So that's not even 1% of the sales. So production ceased over a month ago, and dealer bookings have been halted. The best year was 2022 with 51,000 units of sales, and sales were down 34% year on year from 1900 units in March 25 to almost 1200 units in March 26. So Maruti is planning to replace this with a micro SUV. They have not yet announced the model, but this model will target Tata Punch and Hyundai Exter. And Maruti is also eyeing 2.5 lakh annual units from this new model. So with the expected launch in FY27, Maruti is aiming to strengthen its SUV portfolio, and the expected price range would be around 8 to 10 lakhs, which is just below its Brezza. So the SUV is expected to use the 1.2-liter three-cylinder Z series petrol engine with mild hybrid technology and producing around 80 bhp power. So the conclusion from this news is there was no upgrades in Ignis as such. There was only a facelift upgrade in 2020, which boosted sales till 2022. But after that, the sales have fallen by almost 50%. Whereas Swift, which almost operated in the same price range, it sold nearly 1.8 lakh units in 2022 and is constantly selling that volume. Moreover, Okay. shifting of consumer preference to SUV also explain that the company's decision to discontinue this model. So the Ignis was fundamentally a hatchback trying to compete in a segment that had evolved into micro SUVs. It was 127 millimeter shorter than the Punch and had 13 millimeter less ground clearance, offered no CNG, carried only two airbags versus six airbags which both Tata and Hyundai provided. So though Maruti is late into the SUV segment, it is now shifting gears and aims a target capacity of 4.5 million units by 2029, which is double than that as of today. So that was Okay. for Maruti. Okay. Okay. Good Thank one. you. I think good one. ये पता नहीं था मुझे कि उनका इतना सा प्रॉब्लम है इग्निस में. I think अच्छा हुआ फिर डिसकंटिन्यू किया था. It's a good sign. Discontinue. ये सब कुछ कंट्रीब्यूशन भी तो नहीं था ऐसा. हाँ. नहीं वो क्या होता है कंट्रीब्यूशन नहीं होगा फिर भी वो प्लांट चलाने का गाड़ी बेचने का वो खर्चा तो होता ही है ना एडिशनल कॉस्ट ऐसा है. अच्छा है फिर वो कॉस्ट भी कम हो जाए खत्म हो जाएगा. रखने का कॉस्ट है ना उसकी जगह कोई और गाड़ी रख देते. अच्छा है. Okay, fine, good one. I was on. Okay, Harsh, anything to add on? Harsh?
Yeah. Good morning, sir. Good morning. My news was largely the same, only that the capex Maruti has announced was 10,200 crores for a greenfield manufacturing facility in Gujarat, with phase one expected to add annual capacity of 2.5 lakh units. Additional 5K crores have been approved for Kharkhoda, that is in Haryana, industrial estate, including land acquisition and development. Maruti's installed production capacity currently stands as 2.4 million units annually across Gurugram, Manesar, and Kharkhoda and Hansalpur. It is expected to increase to 2.6 million units annually, reflecting ongoing capacity expansion plans. For 9 months ending FY26, companies sold over 1.3 million units out of the overall market of 4.3 million units, and it holds nearly 41% share of that. Most sold categories were compact, and then came SUV, then vans, mini. Companies sold over 70% share of total CNG vehicle market, and out of 19 models, company has 15 CNG options for them also. Net sales came at 1,24,300 crores, operating profits at 1,020 crores, 10,200 crores. Plans to increase capacity to 4 million units by 2030. Over 4.5K sales outlets are there, of which Arena is at 3.4K and Nexa at 734 and commercials at 370. So what is the ठीक है data was fine बाकी So, data वैसे हाँ largely for the Ignis, I could not find what issues that customers were rejecting. Is it only because it is a mini car and customers are nowadays preferring SUVs? But there was no a data point that SUV composition ratio is increasing per se for the market and Mahindra is benefiting. But why customers are बोला purposely ना rejecting Ignis अभी is बोला ना अभिषेक he told ना that उसके ground clearance कम है airbags नहीं है safety issues है उसमें so people are moving safety issues are largely all the same with Maruti cars. नहीं but वो at that range तो सेफ्टी नहीं है इन ना लोगों ने 7-8 टेस्ट लाख भी की नहीं किया था। Sorry. क्या नहीं किया था सॉरी अभिषेक टेस्ट भी नहीं किया, सेफ्टी टेस्ट भी अच्छा नहीं किया था। अच्छा okay Okay. well then Ignis so I don't like personally the car मतलब Ignis and Espresso were largely the same shape and size. Now, a company is planning to introduce one Suzuki XB, sir. Hello. Yeah, hello and yeah if you look at it, it's like a boxy car. So I don't think it will be, very much impactful in sales because customers have largely moved on from such boxy cars. Wagner also was there, and in Japan, like there also a Honda car which is like a complete box, and it is the most selling cars. But such things don't apply in our market, yeah correct so I बॉक्सी आई don't थिंक think उन्होंने it will जिमनी be भी निकाली largely थी वो impact. नहीं चली ना जिमनी भी निकाली थी वो नहीं चली Yeah, देखिए and it is, sir, it is an off-roader, so company obviously don't expect to earn much from an off-roader vehicle. It is just there to, see that yeah, Maruti has a presence in this market also. ये फिर That's दिखेगा it. ये this is the one ना Sir, XP uh, yeah, Yes, I sir. would like to add to 1 or 2 points. Mhm. Like in the article also there was present that they have chosen the long distribution network, like they have used Nexa dealership, Hmm. which has like also been impacted because it is a low end car and mostly people go for Nexa showroom for like premium level of cars. So that is one of the issue. Plus like weak positioning and also like about the new vehicle. The no, model name is not still not clear, but like industry is calling it Y43, and it will be launching around like 2027. कौन सा यही ना XV ना what which are you talking about No, Rajesh sir, there Maruti is like इससे सर planning to make a डिजाइन, rival of Punch. हाँ तो यही है नहीं ना सर XV डिजाइन No, यही कॉपी है किया sir. है इसमें। No, Yes, sir. yes. It is like different, like Y43, Y43 नाम से है, and like वो sir उसकी costing around like 6 to 9 lakhs ही रहेगी. हाँ तो सर यही जो Like है एक्सपी it है will draw उसका inspiration डिजाइन from the डिजाइन के XV लिए बोला sold है। in Japan okay, मतलब डिजाइन ऐसा होगा नाम yes sir, अलग होगा design ऐसा ऑब्वियसली होगा, हाँ yeah, नाम अलग yeah. होगा हाँ तो वही वो हर्ष बोल रहा है कि ऐसा बॉक्सी वेरिएंट इंडिया में नहीं चलता है दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इंडिया में ऐसा बॉक्सी कार्स लोगों को अच्छी नहीं लगती मतलब जापान में लगती होगी पर इंडिया में नहीं लगती ऐसा उसका कहना है बोले लॉन्च भी कर देंगे बट जैसे एक्सप्रेसो भी नहीं चली एंड तुम्हारी वो जिमनी भी नहीं चली इंडिया में ये जापान में चलती है
बट इफ दिस इज द केस ना सेम वैगनर ही दिखती है. Also, ठीक. sir, at हाँ. a time when Mahindra is bringing such stylish cars into the market, customers would obviously, even if it is out of the price bracket, customers would, vie for something better, even it करेक्ट. is something in the price segment. करेक्ट. ठीक है, मतलब मारुति इट प्लेज देयर ओन ओन कार्ड्स कि हम वो लोग कस्टमर उनको ही सपोर्ट करेंगे, किसको, सस्ते वालों को, ऐसा उनका कहना है. थिंक महिंद्रा इज नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ मारुति डायरेक्टली. Yes, एक कार्स ही no अलग doubt. है, Yes, sir. एक कार्स ही Yes, अलग sir. है उसके. हाँ. Sir, I had a question. Sir, हम्म. since the Russia-Ukraine war, the prices of CNG and petrol have largely started converging. So why are companies focusing on CNG market even now? Because it does not make much sense after this. सीएनजी में Price, माइलेज price of ज्यादा है ना, माइलेज ज्यादा है ना. Sir, for cars like below like 7-8 lakh, which are sporting lower engines, हम्म. uh, they already give great mileage for even like smaller cars in petrol also, Wagner and all. नहीं, ग्रेट So माइलेज पे इट इज the ऑलवेज main मोर so the माइलेज ना. main issue was that CNG was nearly half of the prices of petrol before the हम्म. Russia-Ukraine war, and now करेक्ट. that they have started converging, customers even if I had to choose, I would not go for CNG, instead wait or for an EV car or even a stylish petrol vehicle. Mileage is the same in this price bracket. That was my concern. Like, why are they doing नहीं, this? सी इट इज नॉट ओनली योर चॉइस हर्ष. मतलब मेरा चॉइस बोलो, मैं तो मारुति लूँ ही ना, मैं तो सिर्फ लग्जरी ले लूँ. इफ माई चॉइस इज Okay. दैट. ओके. ऐसा है. तो कैसा है, इट इज नॉट अबाउट द चॉइस, इट इज अबाउट हाउ द परसेप्शन इज देयर अराउंड द पीपल. यू हैव टू टॉक टू एवरी काइंड ऑफ पीपल. अगर तुम बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम जाके लग्जरी वाले को बोलोगे, "अरे तुम मारुति क्यों नहीं खरीद रहे हो", या मारुति महिंद्रा वाले को बोलोगे, "अरे तुम", सॉरी, मतलब बोलोगे, "यार इससे अच्छा तो ईवी ले लेते महिंद्रा की, मारुति लेने से अच्छा". कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स फॉर दैट. सीएनजी वेरिएंट इज समथिंग, आई विल से, जहाँ पे माइलेज ज्यादा मिलता है. पेट्रोल में ग्रेट मिलता है, बट ग्रेट एंड नंबर्स ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस ना. पेट्रोल में 20 मिल रहा है, सीएनजी में 30 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल गेट अ सीएनजी. अभी ये कौन है, सीएनजी वेरिएंट्स आर यूज्ड बाय एवरीवन. स्पेसिफिकली तो फ्लीट सेगमेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है. सेकंड इज योर पैसेंजर व्हीकल, जो वांट टू रिड्यूस देयर पेट्रोल बिल. यू आर सेइंग ईवी पे क्यों जाएगा, ईवी इज नॉट फीजेबल ना, ईवी तुम बाहर लेके नहीं आ सकते. बट सीएनजी हमेशा सीएनजी पेट्रोल होता है ना, इट इज नेवर ओनली सीएनजी कार्स, इट इज ऑलवेज सीएनजी पेट्रोल. तो Okay, sir. यू कैन नॉट कंपेयर ना कि सर सीएनजी सस्ता, मतलब पेट्रोल पे गाड़ी में लेके जाओ तुम. ठीक है, तुम्हारे पास पैसे, तुम लेके जाओ. देयर आर पीपल ना हु डोंट हैव मनी, उनको नहीं अफोर्ड होता है. Sir, अभी one doubt, like इसका रीजन मे बी कैब ड्राइवर्स भी हो सकते हैं कि लाइक क्योंकि ये लो एंड कार्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द वो लोग खरीदते हैं जो हाँ. यस यस. तो टू एस्प्रेसो यूज देखो इट. ना, एस्प्रेसो उसी में है ना, तुम्हारे ओला उबर में यूज होती है एस्प्रेसो. यस Yes, सर. sir. That सो was my इसीलिए initial इसीलिए वो सीएनजी यूज करते हैं. सीएनजी यूज करते हैं. यस यस. Yes, sir, that was my initial क्यों- thought also, but the company has introduced 15 out of 19. They have introduced in 15 models CNG. हम्म. So if their only intention was to provide for cab drivers, they would have focused नहीं on. नहीं, स्मॉल सी 19 मॉडल्स में विक्टोरस भी सीएनजी आती है, विटारा भी सीएनजी आती है, ब्रीजा भी सीएनजी आती है. वही ओके. sir, हाँ. सो देर आर पीपल ना, सी अगर मैं विटारा ले रहा हूँ आज, तो हाइब्रिड लेने जाऊँ तो इट इज कमिंग एट 21 लाख कुछ. वही Yes. अगर मैं सीएनजी लेने जाऊँ तो इट कम्स एट 15 लाख, प्लस माइलेज मोर देन पेट्रोल. एंड पेट्रोल को तुम अगर विटारा पेट्रोल में चलाओ तो बहुत पेट्रोल खाती है विटारा. ऐसी भी है ना, Okay. इतनी बड़ी गाड़ी है, 1.5 लीटर इंजन है उसका. तो मेरे लिए तो सीएनजी बेटर है ना, ऊपर से सस्ता भी है, तो माइलेज में ज्यादा मिलता है. हाँ, अभी ऐसा है कि चलो सीएनजी का लाइन ज्यादा होता है, वो एक कंसर्न है, दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न इन इंडिया, कि सीएनजी का लाइन बहुत ज्यादा होता है. Sir, reach भी नहीं है. There are only 8,000 CNG हाँ, तो stations in India. वो एक बड़ा प्रॉब्लम है सीएनजी का. Sir, I have written an article on the CNG space. Can I speak? Yeah, go ahead. Okay. Yeah. So, Maruti Suzuki could benefit a lot because the government of India may remove 14% excise duty on CNG. So, right now, Maruti already gets 34% of its total sales from CNG. So, any price cut would likely benefit them. So, India sold around 4.6 million four-wheelers in FY26 with the fuel mix. Based on fuel mix, 47% is petrol, 22% comes from CNG, 18% from diesel, hybrid accounts for 8%, and
EV accounts for 4%. So the lower tax on CNG can further increase the CNG share. Maruti is the biggest player in CNG, while Tata Motors is also catching up with 24% year-on-year growth in FY26, driven mostly by their Nexon and the Punch CNG variant. The top CNG cars are Ertiga CNG, Punch CNG, Wagoner CNG, Desire CNG, and the Nexon CNG. These are the top 5 CNG cars which are sold. For users, the benefit is simple. If a car gives 25 kilometer per kg mileage, a CNG price fall of 8 to 12 rupees, that is after removing the excise duty of 14%, you can save around 600 to 750 per month if you drive 1500 kilometers. So this 1500 kilometers, I've given a greater number because I've considered most of them as cab drivers. Cab drivers. Yes. Yeah. So India is following a dual transition strategy. CNG is growing. CNG is growing in the 7 to 12 lakh segment, basically in your tier 2 and tier 3 cities and Tier, it in says tier. metros. It is tier 1, tier 2. Okay. Not Tier bad. 2 and tier 3 cities, and basically in your metros where cab drivers mostly use CNG. And EVs are growing in the rupees 15 lakh plus premium segment. With the CNG network expanding to 600 cities from earlier 300 cities 3 years back, and tax cut, Maruti is a strong beneficiary, and we could also see more new launches in CNG going forward with Maruti and with peers as well. TNPS. Fine. I think good one. मतलब this is good article. Mukesh, कहाँ पे था? Where was this article? So this article was in Business Standard Mumbai edition, page number 4. अच्छा. I missed it. There was no 4. data points, but I digged in more deeper and found out. अच्छा, this one, government Yes, suggest yes. excise duty on petrol of CNG. Oh, okay. अच्छा, उसके लिए मारुति होता क्या आज? Yeah, Okay. because Ertiga is the most sold. Most sold, yes. Yeah, CNG even variant, one of yes. my friend has Ertiga, so they said that it's better because whenever petrol availability is less, so I switch to CNG. It's like an alternative. Alternative, yes. Yes. Fair enough. Okay. But why is they doing it? The move could make comparison So attractive CNG now accounts for 22%. to CNG So I vehicle. think अच्छा, government, okay. if they remove the excise duty, the share could go up most probably. Fine, And the yes. dependence on petrol. So petrol is imported. So CNG would be an alternative. CNG would have been alternative. Yes. Perfect. So yeah, this is specifically for your commercial vehicles भी CNG में आते हैं. If you guys don't know, जो मारुति के जो मारुति commercial vehicles भी बिकते हैं, even Tata Cells, तो वो भी CNG variant में आते हैं. इलेक्ट्रिक का there is a problem of electric, that electric is not feasible, and commercial vehicles में तो electric use ही नहीं हो सकता. It is because of the I would say Range heavy issue. range तो है, पावर भी नहीं होती ना उतनी to carry luggages. इलेक्ट्रिक में इतनी पावर नहीं होती कि they can carry huge luggages. तो ये भी एक इशू है. एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स तो बहुत महंगे आएंगे. सो यस, गुड वन आई थिंक. बट सीएनजी कार्स में ऑन द फ्लीट सेगमेंट परफेक्ट, नॉट ऑन द पैसेंजर व्हीकल. एज हर्ष यू आर राइटली मेंशन कि मैं क्यों लूं सीएनजी में पेट्रोल. करेक्ट, आई टोटली एग्री कि तुम क्यों लोगे. मैं भी नहीं लूंगा सीएनजी, अगर लेना है तो. इतने ही पेट्रोल पंप है. पर स्पेसिफिकली जो भी था वो टैक्सी सेगमेंट के लिए ही है, फ्लीट के लिए. एंड एक ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर पब्लिक एयरलाइन जिनको लेना है उनकी, या जिनकी सच में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसमें वो ज्यादा चलाते हैं. मेरे फैमिली में भी एक ने वैगनर ली ही, टू किट सीएनजी जस्ट टू क्योंकि उसका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता है. सीएनजी में बूट स्पेस अवेलेबिलिटी भी तो बहुत प्रॉब्लम है. तो अभी वो लोग ने वो किया है ना, दे हैव कम अप विद ड्यूअल सिलेंडर्स, जो बूट के अंदर ही होता है, तो बूट पे ज्यादा नहीं जाते. दे हैव मैंने स्प्लिट आ गया, स्प्लिट सीएनजी कैब्स आ. अगर सीएनजी आ जाती है तो मतलब लगेज रखने में बहुत ही दिक्कत. नहीं, कैब्स नहीं, मैं इसकी बात प्रीमियम कार्स की बात कर रहा हूँ.
कैब्स sir, तो they है have ही। done something on the chassis हाँ, installed below the वो लोग ने tank. 2 और 1 टैंक के बजाय जो तुम देखते हो ना अभिषेक, 1 टैंक वो लोग ने 2 छोटे टैंक किए हैं, ऐसा किया है अभी नए कार्स में। अच्छा। तो कम से कम थोड़ा स्पेस तो बच जाता है, ऐसा है। ज्यादा नहीं होता, तो जाता है स्पेस तो और होता ही है, बट थोड़ा बच जाता है, ऐसा है। तो यू तुम ये नहीं बोलते हो, आई विल टेल यू अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। I when I purchased an Honda City around 3 years back, तभी भी hybrid variant था Honda City का, okay. So we were like, actually my father purchased. So electric vehicle में भी because of the battery तुम्हारा boot space कम होता है, अगर तुमको पता नहीं होगा तो from a normal car to a electric hybrid car, electric भी नहीं hybrid car, वहां पे बिकॉज ऑफ दैट बैटरी साइज तुम्हारा बूट साइज कम हुआ था। आई थिंक ऑलमोस्ट 100 लीटर से कम हुआ था ना, दैट वाज द ह्यूज थिंग दैट हैपेंड होंडा सिटी। होंडा सिटी की बात करें तभी की बात है, द रीजन आई डिडंट परचेज हाइब्रिड एट दैट टाइम इज बिकॉज हमको लगा यार, मतलब ऑब्वियसली 3-4 लाख महंगा भी था, सेम वेरिएंट एवरीथिंग वाज सेम, जस्ट हाइब्रिड था। तो ऐसे इतने अगर किलोमीटर चलाने नहीं है तो हाउ डज इट मेक टू बाय एन हाइब्रिड, सिंस आई हैव परचेज फॉर माय डैड, तो उनका ज्यादा ट्रैवल नहीं होता, बट इससे भी जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएनजी से जाता है, सीएनजी तो पूरा ही चला जाता है, हाइब्रिड से थोड़ा बहुत जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स है इंडिया में, मतलब ऑन द बूट स्पेस। बट कैब ड्राइवर्स क्या होता है, कैब ड्राइवर्स पता है, इफ यू नो दैट अगर कैब जाते तो अज्यूम करो कि उसमें लगेज होगा ही नहीं, एक हाथ रह जाता है, एक बैग रह जाता है। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम लगेज हो तो तुम वो बड़ी वाली एसयूवी बुक करो, या इवन माय डैड तो ऐसा करते कि वो अर्टिगा बुक करते 2 जन के लिए, ताकि पीछे का स्पेस में तुम्हारा लगेज रह जाए, ऐसा है। तो यू कैन नॉट बुक एन अर्टिगा फॉर 5 6 पीपल। हम्म। तो एक डाउट था मुझे, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है। तो आपने जो यूट्यूब वीडियो दिया था एक, जो होटल सेक्टर अभी 70,000 की ऐड कर रहे हैं, हाँ। तो आपने बोला कि जो होटल सेक्टर है वो उसको अभी प्राइस नहीं कर रहा है, हम्म। तो वो आप कैसे समझते हैं कि प्राइस कर रहा है कि नहीं कर क्योंकि अगर तुम टूरिज्म सेक्टर देखो तो गिर ही रहा है ना पूरा, टूरिज्म में लास्ट 1 साल में पूरा सेक्टर गिर ही रहा है। प्राइस इन नहीं किया, रहा? मतलब स्टॉक्स स्टॉक जो प्राइस अभी तक मूव होना चालू नहीं हुआ है, ऐसा बात था, वो डायरेक्शन में। आई कैन बी रॉन्ग ऑन दैट, आई कैन बी रॉन्ग ऑन दैट कि ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुका है, वो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ग्रोथ होगा ही नहीं। बट वही तो हम चल रहे हैं ना पूरे टूरिज्म पे, वी आर फोकसिंग, मतलब ये अभी से नहीं, अभी से वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट तीसरे बैच है, थर्ड बैच है, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने पहले से, 6-9 महीने पहले से यही बात चल रही है टूरिज्म की, वो टूरिज्म अभी तक पिक आउट नहीं हुआ है, चला ही नहीं अभी तक, ऐसा है। विल टेक टाइम, बट रोज के रोज चीजें आए, थोड़े बहुत स्टॉक चले उसमें, विंतिव चल गया है, सैमी नहीं चला है, आईएचसीएल उधर के उधर है। देन मैं इसके लिए वो मार्केट ट्रैकर में बनाता हूँ कि समझने को कि हम जो बात कर रहे हैं एज इट इज इम्पैक्टिंग द स्टॉक और नॉट। हम बोल तो रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, बट इट कैन हैपन दैट वो लोग ने अभी तक उनको, मतलब जो लोग हैं, जो एनालिस्ट लोग हैं या इन्वेस्टर है, दे थिंक दैट ओके इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी कैसे होटल्स ऐड होना इज नॉट एन इम्पैक्ट, उसका ऑक्यूपेंसी कितना आता है वो एक अनसर्टेनिटी है। एंड अभी ये ना सी वॉर की सिचुएशन में, ये एलपीजी क्राइसिस की सिचुएशन में, मतलब वॉर हुआ उसके लिए एलपीजी क्राइसिस हुआ है, अभी उसके टूरिज्म, उसके लिए वॉर हुआ उसके लिए टूरिज्म इम्पैक्ट हुआ है, आज ही है ना न्यूज में कि टूरिज्म भी, ग्लोबल टूरिस्ट इंडिया इंडिया में आना कम हो गया, 15% से गिर गए। तो ये सब तो इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो तब तक ये रिवाइव नहीं होते तब तक होटल सेक्टर नहीं चलेगा, ऐसा है। वो भले एक्सपांड क्यों ना करे। तो वो क्वेश्चन मार्क था कि प्राइसिंग हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा है। सो द व्यूज आर सब्जेक्ट कैन बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, हाँ हाँ, आई कैन नॉट गिव व्यूज ना, मैं आई एम नॉट एन इन्वेस्टर। मैंने किधर बोला उसमें कि प्राइसिंग किया है, तो उनकी प्राइसिंग हुआ है, हो सकता है। तो वही तो रिसर्च है ना, वही तो हम करते हैं, वो तुमको करना है। मैंने तुमको दे दिया कि ये सेक्टर है, जब तक प्राइसिंग नहीं है तुम बताओ मुझे, यू कम एंड टेल मी अभिषेक कि सर ये प्राइसिंग तो हो गया ऑलरेडी। प्राइसिंग मतलब उसका जो रेवेन्यू फोरकास्ट होके उतना स्टॉक का मूवमेंट हो चुका है, ऐसा। क्योंकि जितने होटल्स मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो सभी ईयर टू ईयर डाउन ही है, सैमी डाउन ही, वही बस तो, हाँ। 10% अप है। सैमी 10% ऑफ, यस। तो वही है, तो अभी 10% अब ऐसा नहीं होता है, इट इज लाइक उसका वैल्यूएशन भी कितना है, ईवी बाई EBITDA कितने पे चल रहा है सब, तो फ्यूचर फोरकास्ट है ना, अभी का नहीं। फोरकास्ट तेरे EBITDA क्या है, तो इसलिए तुमको पता होना चाहिए सेक्टर में क्या चल रहा है, इसका EBITDA आगे तक कितना हो सकता है, अगर ये रूम्स बढ़ते हैं, पता चले रूम्स बढ़ रहे और ऑक्यूपेंसी गिर गया। बीच में कश्मीर में भी इशू हुआ, कश्मीर में
वो अपना अटैक हो गया, उसके वजह से वापस फॉरेन टूरिज्म आना, उधर पूरा बंद हो गया, टूरिज्म टूरिस्ट एक्टिविटी। तो अभी ये वापस कश्मीर में तुमने नोएडा नोएडा होटल्स, में देखा अभी कुछ मतलब अनरेस्ट हुआ है। ब्रांडेड होटल जो है ज्यादा कश्मीर एरिया में तो है नहीं, नहीं थोड़े तो बहुत कैसा है, आईसी। नहीं कैसा है ओवरऑल व्हेन सी, अभी मैं बोलता हूँ यूएस में है ना, बे एग्जांपल, वॉर चल रहा है, किधर चल रहा है तुम्हारा, ईरान और इसराइल का ईरान और चल रहा है। यूएस। तो दुबई में भी इम्पैक्ट तो हो रहा है ना, जाओगे दुबई अभी घूमने, जाओगे घूमने नहीं। दुबई? हाँ, या फिर चलो दुबई नहीं, चलो ओमान जाना है तुमको, या उधर से किधर जाना है, पता है लोग उसके एयर स्पेस भी यूज नहीं कर रहे, सीधा। हाँ, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी क्लोज है पूरी। हाँ, तो क्यों होता है, पीपल गेट स्केयर ना व्हेन समथिंग हैपेंस इन अ कंट्री। अभी यूएस में तो कुछ हो उसका गया, अटैक हो ओवरऑल गया, इम्पैक्ट पड़ जाता है। हाँ, तो ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसे टूरिज्म पे इम्पैक्ट, नहीं जाना है उधर। अभी जैसे हम हाँ जब बोलते हैं, अभी नोएडा में देखा अनरेस्ट हो रहा है कुछ, सी हाँ समथिंग इज हैपनिंग इन नोएडा, तो आओगे ये टाइम पे हाँ। दिल्ली घूमने आओगे? नहीं आओगे, नहीं हम्म, आओगे तो ऐसा इम्पैक्ट होता है ओवरऑल। मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी हो गया ना इंडिया में, तो that, मतलब टूरिस्ट को ही मारा है इनफैक्ट, ऐसा था। दैट इज हाउ रिस्की। तो थोड़ा एक अनरेस्ट हो जाता है ना बाकी लोगों में, फॉरेनर्स के दिमाग में कैसा है। तो इंडिया में ना इसके लिए सेफेस्ट फॉरेनर्स जो आते हैं, पता है, गोवा जाते हैं और आजकल ऋषिकेश जाते हैं, वहां पे तुमको और राजस्थान जाने लग गए। ये तीन जगह पे यू सी फॉरेनर्स मोस्ट। बाकी तुम सिटीज में दिखते क्या तुमको फॉरेनर्स, बाकी कोई सिटीज में इंडिया में? अभी अयोध्या नया नया हो रहा है बिकॉज ऑफ द राम मंदिर, और या फिर वो जहाँ पे पिलग्रिमेज प्लेसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ इसके वजह से देर इज टूरिस्ट अराइवल। बट अभी ये वॉर हो गया तो वैसे भी लोग आना बंद कर दिए। understood. आज ही था Thank ना you. एक न्यूज, है किसने तो लिखा था, हितेश ने, हितेश सर। ठीक है, मयंक, एनीथिंग ऑन रेनॉल्ट? Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Renault targets 5% India shares with 7 launches by 2030. India to drive 40% of its global volumes. So, India is targeted to become a top three global market for Renault Group, with exports targeting around 2 billion euros annually by 2030. Talking about its product and platform strategy, new launches will be built on RGEF and RGMP platforms, which are Renault Group entry-level and modular platforms with multi-energy options such as ICE, hybrid, and EV powertrains. The focus is more on compact SUV segments, which is high volume growth category, currently contributing around 50 to 55% of PV volumes in India. For this, Renault is building a 15,000 employee hub, including 6,000 engineers in Chennai, Tamil Nadu. So strong localization with a local engineer base will lead to cost competitiveness for Renault. Talking about disruption, so compact SUV segment, which contributes 50 to 55%, as I already highlighted, this will be under pressure. So new Duster and Pipeline C SUV model, which it directly overlaps with Creta, Brezza, and Nexon. So market share gains for Renault may lead to volume dilution for Maruti, Hyundai, and Tata. So what is my takeaway, that Renault scale up is less about absolute share, but it is more about incremental pressure on existing segment leaders such as Tata and Suzuki. Compact SUV leaders could see market share fragmentation and pricing discipline weakening. So in near term, I'm not sure, but in medium term, the industry margin will compress during the expansion cycle, as same happened with Kia in 2019. Kia England, okay. But man, you have Yes, written sir. this news so good. No? So why do तुमने जो when you were presenting as if you are presenting some line items, ना, profit after tax is 30%, EBITDA margin is 20%. So this is how it looked like. So you could have Okay. specified ना, converse करो ना. Why are you not conversing? मतलब वो it's better. आज पता नहीं, every day you do it. आज मतलब I was waiting for your conclusion first. So Renault is targeting 5% market share. तो तुमने data point ज़्यादा बात नहीं की. I'm not sure why. Renault is planning. See, first is Renault is planning to have 5% market share in India, and
चाहिए इंडिया टू ड्राइव 40% ऑफ ग्लोबल, ये तो बाद में आएगा ना, हेडिंग में ही क्यों डाल रहे हो? Mm-hmm. Renault targets 5% India share with 7 launches by 2030. This is the bigger news. Yes. Okay. Right. So as Renault is targeting 5% mark, तो ये हो गया है, तो what happened? Renault वापस Renault plan export target 2 billion, ये ठीक है, जाने दो। फिर क्या कर रहे हैं? तो the Renault is launching 7 new products. कौन से इसमें, कौन से ICE में है, हाइब्रिड में, EV में है? So EV. that will and that is focus on अच्छा नहीं, Compact SUVs. compact SUVs, which will directly disrupt players like Brezza, Creta, Nexon. Nexon. हाँ, market share gains for Renault. तो क्या है, compact SUV segment? हाँ, the compact SUV, you can say the compact SUV which contributes around 50 to 55% of the PV volume, and it includes cars like Creta, Brezza, Nexon. This is where the Renault is targeting. So obviously the volumes are at risk for Hyundai, for Maruti, Hyundai, and Tata. तो ये हो गया। This was the crux of the news. वो इतना ही न्यूज था, फिर उसके आगे तो सब नॉइज थे, नॉइज सब डेटा पॉइंट्स थे कि उसका क्या कर रहा है, दिस रीबिल्डिंग ऑफ 15,000 एम्प्लॉय हब। तो कैसे करने वाला है सब लॉन्चेस के उसने क्या किया है? दे हैव बिल्ट अ 15,000 एम्प्लॉय हब इंक्लूडिंग 6,000 इंजीनियर। उसमें ये भी न्यूज था कि उनका जो चेन्नई का प्लांट है वो फुल्ली ऑपरेशन हो गया, निसान से जो लिया है। वो किधर है? वो नहीं लिखा तुमने? वो लिखा था उन्होंने। और with this they will also target to drive 40% of its global volume, export volume। Right. है ना? तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम पहले क्यों आ रहा है? बिकॉज दिस न्यूज रेनॉल्ट से बात ही नहीं करना ना हमको, रेनॉल्ट की वजह से किसको इम्पैक्ट होना उसकी बात करनी है, Right. राइट ना? So the introductory paragraph would have been more precise and हाँ, मोर more प्रिसाइज, related. Yes, I have scattered it around the news. I understood that. हाँ, स्कैटर्ड किया और कुछ नहीं भाई, इतना अच्छा लिखा था बट वो स्कैटर्ड इधर उधर गया, ऐसा है। Okay, shall I reframe it and post? हाँ, रिफ्रेम करो, क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग से ऑलवेज विद अ रीजन। 5% मार्केट शेयर विद 7 मॉडल्स, तो कौन से 7 मॉडल्स, वो इंपॉर्टेंट है ना। अभी वो कितना शेयर कर रहा है, अगर हाँ, अगर ये मारुति होता तो शायद से ओपन होता कि हाँ, 7 मॉडल से वो 40% टारगेट कर रहा है। पर हमको थोड़ी रेनॉल्ट के रेवेन्यूज देखने हैं, हमको तो ये करना है कि उसके वजह से वो 7 मॉडल की वजह से इम्पैक्ट किसको होने वाला है, Right, right. ऐसा है, ठीक है। सो इट इज Okay. ऑन द कंपनी टू कंपनी, बोला ना, अगर मारुति होता तो यस यू हैव टू टेल इट कि 40% शेयर उसका वहां से आने वाला है, केवल लिस्टेड कंपनी का। Right, right. Okay. Sir, I'll send it again by reframing Yeah. it. Yes. Yeah, Sahil, anything to add on, Sahil? Yes, sir. Good morning. Good morning, everybody. So, sir, I'll just add on a few points. So, Mahend talked about the Duster model. So, the Renault is also coming up with the Bridger Bridger model in the entry level SUV. So, it will be Bridger, competing okay. against the like Venue or Tata Punch and that segment. So, entry level SUV segment will be grabbed by this Renault. So, and a bigger threat is for the like the Maruti. Like I'll just talk about the few listed list. So Maruti takes a direct hit on the Brezza model, but not with with the Bridger model, and Vitara Bridger. gets a direct hit with the Duster model. So Bridger, why Bridger? So Bridger is coming with an EV model also, like it has multi model, मतलब ICE भी है, hybrid भी है और EV भी है. तो Okay. Bridger वो लोग हर एक, हाँ मतलब वो लोग का 2 प्लेटफॉर्म है ना, RGEP एंड RGMP. तो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म से ना वो लोग Bridger हर एक जगह से लॉन्च कर रहे हैं, और वो प्राइस बैंड भी बहुत फेवरेबल है, मतलब 7 से 12 लाख, मतलब वो कैसा है कि हर मार्केट ग्रैब कर सकते हैं वो लोग, गिवन दिस मतलब गिवन द सर्विसेज. सो एंड टॉकिंग अबाउट द टाटा का जो नेक्सॉन मॉडल है और पंच मॉडल है, उनका मोट एक रिस्क में रहेगा, क्योंकि ब्रिजर एक ऐसा मॉडल है कि एंट्री लेवल एसयूवी में बहुत अच्छे से प्लेस किया उन्होंने, गिवन द प्राइस एंड गिवन द मतलब डस्टर क्या इसको, इनका एक कुछ तो आर्टिकल आया था, काइगर और डस्टर का बीच वाला वर्जन इज दिस ब्रिजर. अच्छा, ओके। हाँ, एंड ह्यूंडई का तो क्रेटा ऑलरेडी एक थ्रेट था कि सेल्टॉस तो खा ही रहा है उनका मार्केट, तो अभी ये डस्टर भी खा ही रहा है. एंड अगेन मतलब सबसे सेफेस्ट सिर्फ यहाँ पे महिंद्रा है, क्योंकि महिंद्रा का ईवी प्लेटफॉर्म तो हायर प्रीमियम है, इसके लिए वो लोग सेफ है. और वो लोग का स्कॉर्पियो और XUV 700 वाला मॉडल भी सेफ है, क्योंकि जो मतलब इनका जो मॉडल्स है वो कम्प्लीटली अलग लाइनअप में, और महिंद्रा सबसे इंसुलेटेड है इस सब में, मतलब गिवन द स्कॉर्पियो एंड XUV 700, क्योंकि वो थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा, sorry. So Mahindra is most insulated in this higher end SUV. मतलब Duster can still be competing in that segment, but the like the aggression is the mode for Mahindra. So
according to my research, I feel Mahindra has the safest portfolio in this SUV space, and again the EV space, because EV space is again in a premium, like the price is quite high, and they are not competing in that. And again sir, third एक और product आ रहा है, that is the Bigster करके एक model, that is a 7-seater SUV model. So and again मतलब 7-seater में तो again the like MUV वाला platform will be disbursed by these this Renault. तो उसका Okay. प्राइस वगैरह अब तक कुछ लाइन अप नहीं है, बट थर्ड मॉडल इज दिस Bigster model. So I will say, if I want to conclude it, they are coming on 7 models specifically. Duster तो है, this is one. Second is the Hmm. Breezer. हाँ, Third is your Bigster. the 7-seater. Dexter. Okay. So Bigster. 7-seater Duster. So usually the price range will be 15 to 20 lakhs. Yeah, हाँ, Duster. हाँ, 10 to 13 to 17 में कुछ तो आता है वो. 13 to 17. Okay. Okay. So this will disrupt the Marutis or मतलब the compact SUV segment, that is Brezza segment. The Vitara नहीं है ना? I think इसमें 7-seater ये है. Vitara है ना. Duster. अच्छा, Duster will compete with Vitara. So Vitara. Brezza. अच्छा, and you're saying that the Breezer will compete with Brezza. Brezza. And Hmm. the last one, so Drizzer. Okay. Drizzer will Bigster. compete with the 7-seater. Okay, so that is with Mahindra है इसमें. Will Mahindra be Renault's Bigster अच्छा 7-seater हाँ, Bigster, हाँ. SUV based on industrial line also Mahindra. Okay. 7-seater, I think it will be in the range of Ertiga. Ertiga is- की रेंज, हाँ, लोग Ertiga Ertiga के लिए ना, ला हाँ, रहे हैं लोग. Ertiga होगा. I think Ertiga Mahindra को Romeo नहीं नहीं होगा. सकते. करेक्ट, महिंद्रा का तो नहीं होगा बिकॉज वो नहीं, फिर नहीं, बहुत हाँ. बड़ा हो गया. महिंद्रा को खुद को इतना टाइम लगा टू मेक दोस प्रोडक्ट्स वायबल इन इंडिया. हाँ, वो उन्होंने तो अलग ही किया है. एंड वॉल्यूम्स कम है ना उसमें ओवरऑल. हाँ, उसमें, हाँ, हाँ. वॉल्यूम्स कम है. बट फिर भी एक बस एक ही स्कैल्पिंग करेंगे वो लोग के इसमें, मतलब इनका मार्केट हाँ. लिस्टेड प्लेस का मार्केट जा सकता है, बस इतना ही है. हाँ. Let's see how it works on. तो I have a number on, I have a look on Duster. देखो रास्ते पे दिखती है क्या गाड़ियाँ. हाँ. रास्ते पे अगर ज्यादा दिखने लग गए तो इसे समझना मारुति एंड Hyundai आर इन प्रेशर. बट सर एक और की पॉइंट है, ये रेनॉल्ट और निसान जो है ना, निसान का 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है. मतलब निसान, हम पहले कैसे हमने सोचा था कि, मतलब मैंने सोचा था कि ये लोग अपना मार्केट शेयर खाएंगे, बट ये लोग का 70% रेवेन्यू तो बाहर से आ रहा है. निसान को तो 4 ही प्रोडक्ट है ना, वो कुछ मतलब अभी याद नहीं आ रहा है मॉडल का उनका नाम, बट इंडिया मार्केट में कम बिकता है वो. और ऑटो पर मतलब वो जो नंबर से कम ही है, और उसमें 70% बाहर है. और रेनॉल्ट का भी ये लोग ने क्या किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज बताया है. तो मतलब आई फील कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, होगा नहीं पड़ेगा. हाँ, थोड़ा बहुत कोई देखना है कि हाँ लास्ट टाइम बहुत फर्क पड़ा था. हाँ, ये तो वो तो नया नया सब आया था ना, एसयूवीज नया नया वगैरह आता जो है. आया. हाँ तभी. Maybe yeah, this time let's see how people react to it. दिखता है, देखो रास्ते पे ध्यान रखो, दिखती है कि हाँ, डस्टर. ये तो नहीं दिखा अभी तक. आई क्या डस्टर? आई है लेकिन. हाँ, आ गई सर, डस्टर आ गई है. ओके. वो लोग का, और उन लोग का नंबर्स भी अच्छा है, मतलब कुछ तो नंबर शायद से 3,000 फिर 4,000 कुछ तो था, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली फिगर, अच्छा. बट हाँ इस रेंज में था. तो वो लोगों ने बस बोला है कि ये अगर कंसिस्टेंटली मेंटेन होगा तो फिर ये मतलब खा लिया उतना मार्केट, और फिर उसके बाद किगर मारेंगे. ओके. फाइन. फाइन. ओके. Sir, I have a doubt हाँ, yeah man. regarding that cafe norms. Like Tata and Mahindra will focus more on EVs, and they will the EVs will contribute substantial portion of their existing portfolio. But I don't think, like, I am not sure that is it realistic because the infrastructure is not good and people are not buying EV much more faster in passenger vehicles. And in order to boost such sales, they need to give more incentives on EV. And if they do it, then definitely their margins will be under pressure. So डिस्काउंट पे तो नहीं देंगे, सॉरी. yes, and if they don't do it, I don't think with existing prices the customers will adopt it much, and definitely they will need to pay the penalties. हाँ, हो सकता है. But it is And all that's ifs and buts. yes, and that will be a huge blow because their even profits are not that much. Hey, Mahindra is doing good in the EVs. Tata is not. Yes, for Tata only. It is Tata, hardly profitable now, and then if they pay 50 billion, like 5,000 crores in penalty, then how will they, like, again Tata 2-3 years they will be in pressure. Tata is like semi-government. उनके पास बहुत पैसा है. Yes, but if you look company wise, then
I think I personally said when I was an analyst since 2015-16, I don't like Tata Motors at all as a company. I don't like. I don't research only on that. The पहले से not from now, from last so many years. I have never purchased Tata Motors shares. Whether फिर वो मल्टी बैगर भी क्यों ना हो जाए, I don't like. But it is my personal view. ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिया तो चला नहीं है. It has the stock has outperformed. एक time पे it has outperformed. But somehow, as you rightly mentioned, कि टाटा की गाड़ियाँ there's a problem. ये सब problems तो है ही. And Tata EV में तो it is a loss making one. But Mahindra is somehow able to make it profitable. Yeah. Yes. And Yeah. sir, if you talk like it's my perspective that if anything hurts big to Tata's, Reliance, Adani, this policies don't come into force. It Even is Maruti. hurting big to them. Yeah, I've never. because it is an employee generation, no? It is generating employment in India, and if Yes, you too much, too think like much. that, and if they start, firing people, then they will blame the government, and government will not take the blame. Right. ठीक है, जाने दो, तुम बोलोगे करो, जैसे गाड़ी बिक रहे बिकने दो। अभी तो फिलहाल दिल्ली में ही हुआ है ना खराब, जब पूरे इंडिया में हो जाएगा तब देखेंगे पॉल्यूशन Yes. खराब। तक है, करते हैं ना कुछ कुछ पोल्यूशन के लिए, we do it। That is mandatory for दिल्ली में तो चाहिए ही सर। अभी वो दिल्ली एक ही दिख रहा है ना, बट अभी हाँ, और फिर कौन सा धीरे सिटी धीरे मुंबई पे शिफ्ट होगा, मुंबई में शिफ्ट पुणे हुआ में हो भी चुका शिफ्ट है। होगा। हाँ, वो फिर कितना टाइम लगेगा तब तक पता नहीं है, हाँ विल टेक डेकेड्स तक बड़े हो and चुके होंगे, हाँ दोस्तों अभी रिटायर हो चुके होंगे। yes, and government should focus more on EV infra as of now to cope up with all these problems. If it नहीं is होता, good, then definitely गवर्नमेंट हैव अदर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एज वेल। ये तो लग्जरी हो गया ईवी तो, जो लेते दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज जो लेते हैं वो लग्जरी है, ईवी इज अ लग्जरी। right, तुम्हारे sir. But पास as we see that Maruti and other are also coming with entry level EVs. आई टेल यू, माय न्यू स्टे इन पुणे, आई विल टेल यू, मेरे घर पे उस दिन 2 घंटा लाइट नहीं था। तुम बोलते हो कि मेरे मेरे फ्रेंड बाजू में रहता, मतलब दूसरे एरिया में रहता पुणे में ही, उसके घर पे 12 घंटा लाइट नहीं था। डू यू थिंक कि घर पे लाइट नहीं है और तुम ईवी चार्ज करने को तुम्हारी लाइट होगी? Yes sir, but इंडिया पुणे में तो रेयर है ना सर, वो बहुत कम बार लाइट्स नहीं, बट नहीं रेयर है लाइट जाना ही, मतलब बी आई कमिंग फ्रॉम मुंबई, लाइट जाना क्या होता है हमको पता ही नहीं कि लाइट जाना क्या होता है। मतलब राइट पुणे बीइंग अ टीयर 1 सिटी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो जस्ट जस्ट इमेजिन क्या होता होगा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। राइट पुणे सर। बीइंग इंडस्ट्रियल हब, मतलब पुणे इज सेट टू बी द नेक्स्ट बिग सिटी मुंबई के बाद, Yes, yes. उधर Sir, ऐसा प्रॉब्लम है। sometimes that electrification work is going on, that's why they also cut it. ओके, मैं क्लास ले रहा था, आई वाज फोर्स्ड टू कैंसिल द क्लास, हाँ ताकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मेरा लैपटॉप 1 घंटे ज्यादा चलेगा नहीं। राइट। तो ये दिस आर द प्रॉब्लम। भी तुम इसमें पूछो कि अभी गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तुम्हारा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्व करेगा? नॉट श्योर सर। ऑब्वियसली ना, सो दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया, तो इट विल टेक टाइम, तो फोकस तो नहीं होने वाला है। हाँ, अभी ज्यादा हो गया तो ठीक है, दिल्ली में कुछ ज्यादा हो रहा है तो दे विल टेक सम हार्ड स्टेप, ऐसा है। बट हार्ड स्टेप भी राइट। कब लेंगे? फिर लेट्स से इफ दे से दैट हीरो का कल पूरा आइस वेरिएंट बंद कर देंगे, ठीक है एग्जांपल, तो जब तक हीरो के पास इलेक्ट्रिक वेरिएंट है नहीं, हीरो के कितने सारे वर्कर्स काम करते हैं प्लांट में, नो दे हैव टू लीव द जॉब, गवर्नमेंट विल नॉट डू दैट, इट विल फिर अगेन एन अनरेस्ट। ये बोलते तो है करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज एन एनालिस्ट, तब बोला था मारुति का स्टॉक वाज डाउन सम 10%। रीजन इज 2030 तक पूरा इंडिया विल बी इलेक्ट्रिफाइड, 27-28 तक नो नो वन विल एबल टू सेल इलेक्ट्रिक सॉरी आइस वेरिएंट, ऐसा यस था। सर। हाँ, आई थिंक मतलब ये Gadkari said नितिन सर। हाँ, ये 2019 की बात है, 2019 10 इयर्स में राइट राइट एवरीथिंग राइट विल सर। बी 2 साल तो कोविड, 3 साल तो कोविड में चले गए, 10 साल के। So कुछ नहीं, मतलब even see, forget about India, the global economy was saying, global people were saying, Mercedes said that they will only make electric vehicles from 2030। Lamborghini ने भी बोला था, Lamborghini said this is the last Lamborghini we are making of petrol। फिर क्या हो गया, अचानक से पता चला इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स के सेल्स गिर गए पूरे यूएस में। people are thinking that this is not good, मतलब it is not viable option। इंफ्रास्ट्रक्चर उधर उधर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जस्ट इमेजिन यूएस इज हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम विद सो लेस पॉपुलेशन, व्हाट विल टॉक अबाउट इंडिया? राइट इंडिया सर। इज लाइक 50 इयर्स बिहाइंड, ना ये सब होने तक तुम पता भी नहीं रहोगे या नहीं रहोगे तब तक। राइट राइट। ठीक है, फाइन, ओके। सो भरत, यू वांटेड टू प्रेजेंट? Yes, sir. Sir, Yeah. can I share my screen? Yeah, please।
Give me a second, sir. My share is my screen is visible, sir. 1 second, that's loading. Can't visible now. Hello, good morning, everyone. Hello, good morning, Yeah. everyone. Today I'm going to present the Bharat, automobile there is some disturbance from your mic. mic, sir. From your mic. You change your mic. Hello, sir, can you hear me? I can, but there is a lot of disturbance. Yes. Hello, sir. Hello. Yeah, Bharat. Okay, go ahead. I can hear you, but the voice is not disturbance from it. Use the laptop's mic. Changing the headset, sir. Just give me a second. Acha, okay. No? Hello. Hello. Yeah, it's clear now, Bharat. Now it's better, sir? Yes, it's better. Okay, I'm sharing this screen. Is my screen visible, sir, now? Yeah, it's visible. Yes. Yes. Hello, everyone. Hello, good morning, everyone. Today I will be presenting you the automobile monthly update of March 2026. The industry has registered a strong growth of 16.6% year on year to total volumes growing 2.1 million units, which was driven by two-wheelers, which grew 16.3%, and four-wheelers, which grew 16.5%. The demand was driven by strong performance across all segments. Coming to segmental wise, domestic sales grew 15.16% year on year to 1.6 million units, which was led by strong performance of two-wheeler segment, which grew 15.5%, and four-wheeler 15.3%, whereas exports has registered a strong growth of 20.8% year on year, which was led by two-wheelers, which grew 19.4%, and four-wheelers 23.5% year on year, whereas three-wheelers has outperformed the industry and registered a volume growth of 43.5% year on year, reaching total volume sales of 32,000 units, which was driven by both domestic and exports demand. Where coming to CV has registered 50.7% year on year growth, reaching 93,000 units. Coming to segmental performance, two-wheeler has recorded the highest growth rate of 16.3% year on year, reaching 1.5 million units, which was primarily driven by motorcycle segment, which grew 12.4% year on year, reaching 1.4 million units, followed by scooter segment, which grew 35.5% year on year, reaching 283,000 units, whereas electric scooters has emerged as the fastest growing segment.
registering 44.3% year-on-year growth, which was supported by ongoing fuel crisis and quick commerce stores expansion. Coming to the two-wheeler domestic sales has grew for 15.5% year, reaching 1.2 million units, which was led by Hero MotoCorp, which growing 8.3% year on year, which was followed by TVS, which grew 25.1% year on year. The exports has registered 19.4% year on year growth, led by Bajaj growing at 20.7% year on year, followed by TVS, which grew 22.7% year on year. Coming to key performers, TVS has outperformed the industry with the sales volume growing at 25% year on year to 498,000 units, which was led by its scooter segment, which was led by its motorcycle segment growing at 18.3% to 232,000 units, followed by scooter sales growing at 13.9% year on year, reaching 217,000 units. Whereas its EV scooters has emerged as the highest growing segment among the companies, with a growth rate of 44% year on year growth, where volumes reaching 38,000 units. Its market share has expanded by 210 bips to 31.3%. Coming to Hero MotoCorp. Hero MotoCorp has remained as the market leader with total volumes growing at 37. No, market leader having a market share of 37%. Okay. Okay, sir. Huh. Hero MotoCorp has remained the market leader with a total market share of 37.1%, though its market share has declined by 206 bps due to the subdued demand in the motorcycle segment, which grew only 5.1%, whereas scooter has posted the strong growth of 53.1% year on year, reaching 65,000 units. Its domestic sales grew 8.3% year on year, reaching 552,000 units, led by motorcycle segment, whereas exports registered a strong growth of 15.6% year on year, reaching 45,000 units. Bajaj Moto has reported a steady growth of 20.5% year on year growth, which was driven by both domestic and export growth. As the company only manufactures motorcycles, showing its steady growth in the motorcycle segment. Coming to Eicher Motors. Eicher Motor also reported a steady growth of 11.2% year-on-year growth, which was primarily led by domestic demand, which grew 16.14% year-on-year, reaching 100,000 units, indicating a strong demand for performance bikes in the market, while the exports has declined by 8% year-on-year to 12,000 units, which was due to the weak demand in international markets due to high inflation and economic slowdown, indicating economic slowdown. Coming to four-wheeler segment, four-wheeler segment has reported a 16.5% year-on-year growth, reaching 420,000 units, which was driven by SUV demand growing at 18.4% year-on-year, whereas EVA has emerged as the highest growth segment with a volume growth of 114% year-on-year growth, reaching 7,000 units. Reaching 7,000 units only? Sorry, sir? Four-wheeler segment have growth 16%, 420 units. Okay. You can also write now what is the EV penetration there overall? If 7%, 420. EV is only 1.8% of the total sales, sir. Okay. For this company, no? Okay, fine. इसमें MG नहीं है ना? Four-wheeler segment. Four-wheeler, because it is only about the top 4 companies, huh? Yes, sir. Okay. What is the share of EV usually? 4.5%, India में.
4% for passenger Yes, vehicles. sir. In that, of top four companies gain have the 1.8% market share, sir. Correct. Coming to key performance, Tata Motors has outperformed the industry with a growth rate of 29.1% year-on-year growth, registering 67,000 units, which was primarily led by models like primarily led by SUV demand of like Nexon and Punch growing at 30% year-on-year, which contributes 66% of the total sales. Whereas Sierra sales has increased to 9,000 units, reaching 13.6% of the total volume sales. Exports has increased by 204% year-on-year due to the low base. And the company market share has increased by 106 basis to 15.9%, increasing showing the performance of the company. Okay. Coming Bharat, to I think Yes, sir. okay. Good one. Good one. You need to be a little fast while speaking. Fast is in not the tone, the pronunciation. Okay. Because sir. now you have already reached the timeline. Take 2 minutes quickly. What are the things you need to tell? Okay. So you write Yes. everything. Okay. You write everything, whatever you have spoken. Tell ChatGPT to make it into 2 minutes, only 2 minutes. Okay. Only 2 minutes, sir. Because Okay, sir. majority of the things you don't need to speak. It should come in a sentence. Yes, sir. Okay. Okay. So you should not talk more than 2 minutes. 1 minute is fine. 2 minutes is if I like, I will give you the extra minute. Okay. As in Okay. when you go for interviews. So it should be very quick. What happened in Tata Motors, Maruti, Suzuki? Sorry, in two-wheelers, there are three players, which is one Hero, TVS, Hero, and Bajaj, and Bajaj Eicher, and sorry, and Eicher. Eicher, four. So quickly, what happened in the four companies? Okay. Then you go quickly on the what happened in the four-wheeler company, which are four companies. That's it. You have to do it in 1 minute time, 30 minutes. Oh, sorry. You start with industry, 15 seconds, or maybe 15 seconds is for industry. The next for 30 seconds is for 40 seconds, or maybe you can say 45 seconds is for two-wheelers, and next 45 seconds is for four-wheelers. That's it. And a 15 seconds buffer to conclude. Or maybe 15 seconds for quickly to sum up with three-wheelers and commercial vehicles. So this should how it should go. So while speaking, you need to be more pronunciation free. You should be very quick. Quick doesn't mean faster. Quick doesn't mean that Yes, sir. quickly you have to say everything. There are a lot of things you have to say. No, only 2 minutes. So tell ChatGPT to make a 2 minute presentation for you. I Yes, need sir. to tell all those things in 2 minutes. First write whatever things you have to speak. And tell ChatGPT don't miss any of the data points. Yes, sir. Okay. Okay. Sir, I have a doubt, sir. Yeah. While explaining, suppose if I want to explain about Maruti Suzuki, should I say everything each consisting of No. every data point? Because if I mention every data point, it will take time. No, sir. That's what. So what you can do is so you need to tell which data point is important. Example, Maruti, what do you say Maruti? So Maruti sales increased by X amount. Usme what increase in sales? So domestic outperform and export outperform. Okay. See how it works. It should go as per the charts that you have made on the left hand side. Maruti, first is the total sales. Okay. Total sales may what Yes, has gone, domestic or export, which has gone, and then the breakup. So what has gone? Hatchback, sedan, the SUVs. That's it. yes, So sir. SUVs has outperformed. So you don't have to tell, sir, SUVs has grown that, sedan has grown this much, hatchback has no. SUVs which contribute 50% of the portfolio have increased 11%. That was a major contributor to the revenue. Fine. Okay. Whereas So, hatchback and sedan grew. Okay, you can also say hatchback. Hatchback was the laggard in that, which grew only 2.4%, whereas sedan was flat at 31%. Okay, so you have to be okay. that quick. Should be that quick. In one paragraph, only all the three things should come. So it is okay to mention just the growth. That's not the numbers. No, Right? numbers are not important. You have told now the numbers. First only you started. Na? Maruti reported a Yes. sales growth of 16.5% to 220,000 units. But then why have to Yes. know numbers? In which hatchback grew to 2.5% and SUV has Haan. outperformed the
Industrial with So has 11.9%. so SUV which contributes 40% of the portfolio has increased to it because that is a larger portion that has led to increase in growth rate. Correct? Yes, sir. But 16% growth is majorly coming from SUVs. But that Yes, growth sir. rate was hampered because of hatchback not performing. So link Yes, it, but sir. that's it. That's it. And Mahindra, there is only one part. So Mahindra sales are increased majorly because of the growing SUV demand. That's it. Yes, sir. Ah. So domestic and export, domestic. So Mahindra, you can do it something. So the Mahindra's overall sales grew 22%, reaching 60,000 units. So where domestic, which contributes 30%, domestic, which contributes 90% of the revenue, and majority of the Mahindra portfolio is from SUVs. So that has increased by 24.4%. Yes, sir. Okay, this is how you speak. Fine. Should I make a 2-minute script, sir? And again Make a 2-minute present it script. to you? Yeah, make a 2-minute script and then present. Okay. I'll Okay. take it, present it on Monday. Okay, again. Yes, sir. Okay, 2-minute script. Or you can send me, no need of presenting it now. You can send me. Looks, here, why again, why white spaces? Why it is empty over here? Here, sir. Huh? Sir, actually, I have made these charts over here, tables over here, sir. No. So there are not much tables regarding. So don't make tables over here. Make sure it Okay. is on the front page. Or if it's full, then only make it. Okay, if you think that the entire list is filling up, then only make tables. Because numbers are here, no, numbers are already over here. So try to add more things in the paragraphs. Okay, Maruti, try to add tables of Maruti over here. You can add tables of Maruti. Here only, sir. Here only, you can add tables. Okay, apart from this, also add tables. Okay. Start with tables and then the graph. So it will do better. Okay, it will work better. Yes, sir. Because you said that tables can't be inserted in this space, so I have inserted here, sir. No, that's only for front page. You can insert over here, and then this will, Okay. this will come from here. No, this your margins will go lower, so you will have more space here. Yes, sir. Here Okay. I'll have. Can I just paste more charts here, sir? Like four tables. Yes, because you see now Alright. that charts that we have, everyone has not written tables over there. Put tables here only, because tables are only Yes. for front page, just to get a knack at what has happened in the industry. Okay. Okay, sir. From second page, you don't put tables unnecessary, because how much table you will put then? It will say, it will look, it doesn't look good, no, the space. Yes, sir. Okay. I'll just reduce this space and insert the tables here itself. Yes, please do that. Sir. Okay, so I'll make the changes and send it to you. And be fluent while speaking, okay, Bharat? It should not Yes, be, keep it in front of you if you want. Keep it in a mobile in front of you, or keep it, better keep it in your mobile in front of you. And in that also, you should only speak about 3 lines. You know how we speak newsletters? 3 lines, 3 lines, 3 lines. You should take a break after 3 lines. I should know that you are going to a new topic. Okay. Yes, sir. Okay. Actually, while explaining it to you, we should present each and every data point also. So that is the reason it is taking time. Not each and every data point. First of all, you should not present the units. It is just units. Now it is just about percentage. Because I will not, after reading your entire, after listening to you, I will not remember what was the numbers for Maruti. Each and every number, domestic, hatchback, SUV. I will only know percentage. When you say Maruti sales were increased, I know because SUV sales have increased. And you should mention that SUV contributes 40% of the revenue. That's it. Yes, sir. And if it's, sedan, sedan is a very small portion. So you should not mention only how much percentage contributes. Or if you can write it, you can write it there, but don't mention it while speaking it. Okay, sir. Okay, because now we know who are the two major one, SUVs and hatchback. They only contribute majority of the sales. Sedan was the lowest. Yes, okay, so sedan, you can say sedan has shown a 31%, but it hardly contributes to the revenue. If you want, or sedan was the sedan has not performed well, something like that. Or just a data point, sedan has increased 31% mainly due to increase in Swift Dzire sale. Okay, sir. And usually see here, that is why you need to have a bifurcation over here, all this. Okay.
Yes, That sir. easily I can understand that what has happened. When you talk about SUV domestic, I know what exactly has happened. Okay. Okay. I'll just make the changes again and share it to you, Yeah, sir. just make it. Yeah. So sir, again, after like presentation, I'll record and send it to you, sir. Is that okay? Fine. That also works. Okay, sir. Okay. Yeah. Sir, regarding the financial model, Thank you. I had- Rohan. so I was watching the first class, and you told that you will send a link of the videos of how to make the model. So, How to punch numbers. हाँ मतलब एनुअल रिपोर्ट से कैसे वहाँ से वो नहीं है क्या लाता है, इसमें? ग्रुप डिस्कशन में नहीं है? 1 second. तो वो लिंक हमारे ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। Be there in the group description. ये मीटिंग में हो ना तुम? यस सर, ये मीटिंग। डाल दिया मैंने, ग्रुप डिस्कशन में डाल दिया। ओके 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 ओके। या शिवम, sir, can I share my screen? या श्योर, या प्लीज। शिवम वो लेफ्ट में निकाला क्यों नहीं? बोला था ना Sir? निकाल दो वो लेफ्ट बैकग्राउंड निकालने बोला था ना मैंने, लेफ्ट हैंड साइड के जो कॉलम में अभी क्यों रखा है सर बैकग्राउंड? अभी लाइट किधर के लिए बोला था, वो लाइट कर और ये ऐसा क्यों है? ये ऐसे क्यों चालू हो रहा है? कौन सा? ठीक है प्रेजेंट करो। ठीक है नहीं चलो प्रेजेंट करो, बाद में बात। नहीं मतलब फर्स्ट पेज का बैकग्राउंड निकालना है, वाइट हाँ करना हाँ वाइट ही करना है। और वो मैंने कैसे किया है? वो कैसे था चार्ट में? अभी इसके चार्ट में कैसे देखा तुमने? वो इसमें कैसे किया है? तुम जो वीडियो फोटोज दिए उसमें कैसे है? जो भी तुमको रिपोर्ट्स भेजे है, वो जो फाइल है ना ड्राइव में वीडियो फोटो है ना, है। कैसे किया वो लोग ने? तुमने कैसा किया? एक सेकंड खोलने दो मुझे, एक सेकंड। ये कैसा है? तुम्हारा कैसा है? और क्यों ऐसा तुम्हारा? सर इसमें भी तो उन्होंने वो ऑरेंज किया, लाइट ऑरेंज। तुम्हारा कैसा है? तुम्हारा खोलो जरा, तुम्हारा खोलो एक सेकंड। अच्छा ये ओके ओके, टेबल में। हाँ ओके, और मैं इधर बैकग्राउंड समझा। बैकग्राउंड, और इधर नीचे नीचे जो चार्ट चालू होता है, इसमें नहीं है चार्ट। ओके यहाँ से किया चार्ट। इसका जो चार्ट है, चार्ट यहाँ से है, चार्ट दोनों 100 से ही चालू होना चाहिए। ओके है दोनों अलग अलग से तो फिर मतलब ही नहीं हो ना चार्ट का। ओके सर। Okay, ठीक है। हाँ करो, प्रेजेंट करो। ठीक है Good morning everyone. So today report is about the automobile monthly update of March 2026. The automobile industry recorded a growth of 15.4% year on year, largely due to the strong expansion in the three-wheelers, which grew 26.9% year on year, and electric vehicle segment, which grew 54.7% year on year. If you talk about four-wheeler sales, it increased by 14.7%, and the two-wheeler sales rose by 15.1%. The three-wheeler sales surged by 26.9% year on year. Commercial vehicles sales grew by 12.3% year on year.
नहीं नहीं, तो वो भी तो बोल दो ना कि कौन लिखा है ना, तुमने टीवीएस आउट परफॉर्म किया है, टू व्हीलर्स में क्या हाँ परफॉर्म किया है, फोर व्हीलर्स में किसने परफॉर्मेंस किया है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग टाटा मोटर्स महिंद्रा एंड टोयोटा। तो जब लिखते हो ना टाटा मोटर्स महिंद्रा एंड टोयोटा, तो उसके बाजू में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लिखा ना। तो टोयोटा भारत टाटा मोटर्स का कितना सेल्स इंक्रीज हुआ, टोयोटा का कितना इंक्रीज हुआ, और महिंद्रा का कितना इंक्रीज हुआ। तो टोयोटा किधर है, टोयोटा थोड़ी हमने लिया है, तुम टोयोटा का कैसे मिला। हम तो सिर्फ 3-4 कंपनी की बात कर रहे हो ना, नंबर कैसे मिले टोयोटा के। सर टोयोटा का भी है नंबर किधर है टोयोटा का, सर। ये कहाँ से मिला तुमको। सर उनकी वेबसाइट से और वो ऑटो पंडित। हाँ, ऑटो पंडित में एक्सपोर्ट दिया है, ऑटो पंडित में तो एक्सपोर्ट दिया होता है। नहीं, ये प्रेस रिलीज में था। टोयोटा किधर, टोयोटा का कौन से प्रेस रिलीज में देखा, टोयोटा थोड़ी लिस्टेड है इंडिया में। सर टोयोटा का था, टोयोटा उनकी वेबसाइट से निकाला था मैंने। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो टोयोटा लिस्टेड नहीं है ना, तो तुमने कहाँ से मिला। ओके। ठीक है, ओके। सर तो हाँ, लिस्टेड का ही करना है क्योंकि मैंने किया का भी कर दी। नहीं किया तो अच्छा है, चलो इट इज ओके फाइन इफ यू हैव डन इट। नहीं, मैं पूछा था कहाँ से मिला, क्योंकि हम तो लिस्टेड ही कर रहे थे, तुमने लिखा है तो ठीक है, ऑटो पंडित तो उसमें से डोमेस्टिक नंबर ही आते हैं ना, किया के एक्सपोर्ट किधर सर आते हैं। वो प्रेस रिलीज से निकाल दिए थे मैंने। अच्छा, ओके ओके, ठीक। हाँ, तो जब भी लिखोगे ना फोर व्हीलर्स, तो अभी आउट स्ट्रांग परफॉर्मेंस किया ना एक साथ, तो स्ट्रांग परफॉर्म किया था, टाटा मोटर्स ने ऐसा ब्रैकेट में लोगे कितना परफॉर्म किया, महिंद्रा ने ऐसा ब्रैकेट में प्रेजेंट नहीं करना है, बट बताना है कि कितना कितना हुआ। जब तुम बोल रहे हो फोर व्हीलर इंक्रीज बाय 14.7%, ड्रिवन बाय स्ट्रांग हुआ टाटा मोटर्स महिंद्रा, इसमें भी टू व्हीलर्स रोज बाय 15, ड्रिवन बाय रॉबस्ट ग्रोथ इन ईवी सेगमेंट एंड स्कूटर सेगमेंट। टॉप परफॉर्मर कौन कौन थे। ओके ठीक है, सर। थ्री व्हीलर में भी टीवीएस ना, स्ट्रांग हुआ बाय टीवीएस कितना। ओके, ब्रैकेट में। ठीक है, यस सर। ओके, हाँ, या गो अहेड। इफ यू टॉक अबाउट द फोर व्हीलर segment, the four-wheeler sales increased from 4,20,000 units to 4,82,000 units in नहीं March नहीं to. नहीं, एक सेकंड, ये भी नहीं लिखना है। फोर व्हीलर इंक्रीज कितना परसेंट से कितना, पिछले यूनिट क्यों लिखना है तुमको, पिछले यूनिट की कोई लिखने की जरूरत नहीं। एंड ये Okay. March 26 थोड़ी लिखता है, वो तो हमको पता है ना मार्च का रिजल्ट है, तो मार्च के बारे में बोलेंगे ना, रिपोर्ट ही मार्च का है। Registering a growth of 14.7% year on year. ईयर ऑन ईयर Means को वाई ऑन वाई लिखते हैं, ऐसा क्यों है। तो ईयर ऑन means ईयर that. नहीं लिखते हैं ऐसा, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नहीं लिखते, दिस इज चैट जीपीटी। ईयर ऑन ईयर लिखना, कॉपी किया तुमने ये। नो सर, पहले मैंने वो किया था फिर रिफ्रेम किया था। हाँ वही तो ना, मतलब वो किया ईयर ऑन ईयर, इतना इतना लिखने को टाइम है तुमको, ऐसा होता ना। ओके। पहले तुमने मैंने खुद से लिखा है फिर उसके बाद हम्म, जाके रिफ्रेम इट किया है। तो बिना इतना ईयर ऑन ईयर लिखने से वाई ऑन वाई लिखना इज बेटर ना, मतलब तुम, मैं बोलूंगा कि तुम टाइम पास कर रहे हो खाली फोकट। ठीक ओके। है, ऐसा ऐसा जज होता है, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो सबने कैसा वाई ऑन वाई लिखा है ना। यस सर। हाँ, और फोर व्हीलर में हम फोर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, फोर और व्हीलर, तुमको सर वर्ड्स तो कम करने हैं। सर तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा कैजुअल रिपोर्टिंग हुई है। नहीं नहीं, तो तुमको कैजुअल रिपोर्ट, तुमको थोड़ी जर्नलिस्ट बनना है, ये तो डेटा ऑलरेडी आ चुका है, उसे वो डेटा प्रेजेंट करना है अच्छे वे में। ओके। फोर व्हीलर लिखा है ना ऊपर, ठीक है ना। और फोर व्हीलर नहीं बोलते हैं, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट बोलते हैं, फोर व्हीलर सेगमेंट नहीं बोलते हैं। ओके। पीवी पढ़ा हुआ है, इधर इधर तो लिखा है डोमेस्टिक पीवी, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट बोलते हैं। और ये अलाइन क्यों नहीं है, राइट अलाइन क्यों नहीं है सब। और ये मैंने तुमको उस दिन भी बोला था ना, ये इधर है, लेफ्ट पे मत लिखो, इधर राइट में रखो, ये साइड पे रखो। सर वो कॉपी हो गया तो. और चार्ट थोड़ा ये साइड रखो, लेफ्ट चार्ट थोड़ा ये इधर आ जाता था, इधर क्यों जगह पेंडिंग है। और थाउजेंड ऐसे नहीं लिखते, थाउजेंड जीरो जीरोज में आता है वो, 3 जीरोज में लिखते हैं, सब स्कूल में ऐसा सेट करते हैं। ओके, गो अहेड।
If we talk about company-wise data, the Maruti Suzuki India Limited reported a 11.3% YOY increased in sale, reaching 1,66,000 units. Export grew by 11.4% to 47,000 units, with the export share rising to 22.1%. Within the company's portfolio, the market share of hatchbacks declined by 4.5%, while SUVs and sedans gained 3% and 2.5% respectively. Dzire emerged as the best-selling model, recording 21,000 units and registering a strong growth of 37.3%. Artiga and Wagoner secured the second and third position with the sales of 17,000 and 17,000 unit respectively. If we talk about the नहीं, अभी जब भी ये चार्ट डालते हो, अगर तुमने कुछ लिखा नहीं है चार्ट्स के बारे में तो चार्ट्स डाल के कुछ मतलब नहीं, इसका कुछ भी समझता नहीं है तुमने। लिखा नहीं मतलब देयर शुड ऑलवेज बी 3-4 लाइंस फिर चार्ट होता है। भी तुमने चार्ट बनाया मॉडल वाइज, क्या लिखा है इसमें, क्या समझू मैं इससे, वो तुमको पहले लिखना है फिर मॉडल वाइज चार्ट डालना है। चार्ट्स ऐसे नहीं डालते रैंडमली। मतलब साइड में मॉडल्स के बारे में लिखना है। साइड में नहीं, इधर ही स्ट्रेट ऊपर ही एग्जिबिट ये तुमने डाला ना, इसका एक्सप्लेनेशन किधर है, मॉडल वाइज सेल्स। एकदम ऊपर जाओ, ये थोड़ा सा एक, ये टोटल एक्सपोर्ट सेल्स सेगमेंट वाइज डेटा, ठीक है। तो सेगमेंट वाइज डेटा और मॉडल वाइज डेटा साथ में आएगा ना। एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट के साथ, एक्सपोर्ट का जो है तो एक्सपोर्ट के साथ डोमेस्टिक आएगा, तो अलग अलग नहीं होता है कभी, तो ऑलवेज लिंक्ड। ऐसे अपने मन के हिसाब से चार्ट्स नहीं डालने होते हैं। ऊपर जाओ, वापस जाओ ऊपर। तो हाँ, तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेल्स, ठीक है, ये बराबर है डोमेस्टिक में। फिर टोटल एक्सपोर्ट डाला है तो टोटल डोमेस्टिक भी डोमेस्टिक, इधर डोमेस्टिक वाला तो फिर एक्सपोर्ट डालो यहाँ पे। ओके सर। ओके, डोमेस्टिक के साथ हमेशा एक्सपोर्ट, और इसको चाहिए तो एक दोनों को एक एक चार्ट में डाल सकते हो। यस सर। दोनों को एक चार्ट आता ना, वो बार वाला जो, यस रेकमेंड नहीं है वो, समझता नहीं उससे ज्यादा कुछ आ रहा है। तो डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक पैसेंजर, या डोमेस्टिक सेल्स या टोटल सेल्स, या फिर तुम वो भी तो कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो पुट द बाइफर्केशन कि टोटल डोमेस्टिक कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। यस सर। टोटल सर सेल्स कुछ में एरो बनाने में दिक्कत आ रही है जो, क्यों, एरो तो वो शेप से बना था ना। नहीं मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे वाला कह रहे हो ना, ये कौन सा? ये डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल मैंने इसमें बनाया था, तो हाँ इसमें ठीक है, हाँ वो एरो डालने की तो गलत, हाँ ये मत बना देना, तो ये ठीक है, चल जाएगा। तो परसेंटेज लिखना तो इसके लिए कंपलसरी। मैंने बोला था ना, डोमेस्टिक अलग बनाओ एक्सपोर्ट अलग बनाओ, तो ग्रोथ आएगा ना। ऐसा है। सी सी पहले क्या है, टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स मारुति का कितना बड़ा है उसका तुम चार्ट दो मुझे, एग्जांपल। टोटल सेल्स कितना बड़ा है, एग्जाम्पल यहाँ पे भी डोमेस्टिक सेल्स से क्यों चालू होगा, टोटल सेल्स से चालू होगा ना। मारुति का टोटल सेल्स कितना है और कितने से बड़ा है वो, ठीक है। फिर उसके टोटल सेल्स के बाद ही में आएगा तुम्हारा बाइफर्केशन की, तो टोटल में डोमेस्टिक कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। फिर डोमेस्टिक सेल्स डालो यहाँ पे, फिर एक्सपोर्ट सेल्स डालो यहाँ पे, फिर सेगमेंट वाइज आएगा नीचे। सेगमेंट वाइज आया, चलो मॉडल वाइज भी डाल दिया, अच्छी बात है कि सेगमेंट वाइज डाला तुमने तो। या फिर सेगमेंट वाइज के साथ अगर ये सेगमेंट वाइज डाल रहे हो तो इसके सामने उसका बाइफर्केशन डालो कि टोटल कितना सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे भी पता है 50,000 मतलब कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, हैचबैक सर ज्यादा करता है मारुति का। सर वो यहाँ पे है। परसेंटेज वाइज ये किधर है, तो परसेंट तो गाड़ी का है ना, तो मॉडल वाइज है। अच्छा की, तो मॉडल वाइज है ना। ओके ओके। हाँ, तो सिर्फ यहाँ पे ये क्या किया तुमने, ग्रोथ, किसका ग्रोथ है ये? नहीं ये क्यों किया है, ये यार मेरा ग्रोथ किसका है, और सर मैंने ये बोला सर परसेंटेज चेंज इन सेगमेंट।
हैचबैक, अच्छा गिरा है वो, अच्छा गिरा है तो चेंज आएगा, कलर चेंज होगा, गिरा है तो यहाँ पे समझेगा कैसे, मुझे लग रहा है ये भी बढ़ ही रहा है, यहाँ पे लाइट कलर आएगा फिर, मुझे समझे नहीं चार्ट क्या, अगर ये ग्रो हो रहा है ये डिक्लाइन होता है तो लाइट कलर आएगा इस पर, ये समझना चाहिए ना कि ये गिरा है, मुझे लगा यहाँ से बढ़ा है, ओके। बट ये क्यों किया यार हमने, ठीक है मतलब तुम पे है वो तो वो सब एक लाइन में आना चाहिए, और उसके लाइन में हमेशा कुछ लिखना चाहिए तुमको, हमेशा दो चार्ट्स के बाद कुछ तो लिखना चाहिए। चलो चार चार्ट ज्यादा ठीक है, बट अगर वो लिंक है तो ठीक है, जैसे टोटल सेल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और डोमेस्टिक कितना एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक कितना ग्रो हुआ, क्या ग्रो हुआ, एक्सपोर्ट में कितना चेंज हुआ, कौन सा मॉडल ग्रो हुआ, तो ऐसे ही चार्ट्स नहीं डालने होते बस रैंडमली, बहुत सही तो डाला है अच्छे चार्ट, बट उसको कुछ लिखना भी है तुमको, यस रैंडम चार्ट का कोई मतलब नहीं है। ओके यस सर। सर तो इसी में जैसे ये मॉडल वाइज सेल्स लिखा है, इसी के नीचे यही लिख दूं कि डिजायर सबसे हाईएस्ट था। हाँ हाँ, तो ये तुमको लिखना है, वही मैं बोल रहा हूँ कि तुमको हर एक चीज लिखनी है क्या है, क्योंकि चार्ट्स तो ठीक है, प्रेजेंट कैसे करोगे, मतलब प्रेजेंट दिस चार्ट क्या करोगे चार्ट में प्रेजेंट, थ्योरी किधर है तुम्हारे पास, समझ रहे हो, यस सर। ये चार्ट है, अभी मुझे भी अगर पढ़ना है ये चार्ट के क्या किया है चार्ट में, तो मैं थोड़ी सब पढ़ने वाला हूँ क्या क्या है, मुझे पता है पढ़ना क्या है मेजरली, तुमको क्या बताना है मुझे कि सर स्विफ्ट अच्छा किया है, और वो ऊपर जो तुमने वो किया है ना, ऊपर या नीचे कहाँ पे, तो नीचे नीचे, हाँ ये वाला स्विफ्ट, अभी कैसे परसेंटेज कभी भी डायग्राम्स में नहीं आता है, परसेंटेज हमेशा पाई में आता है, ओके सर। क्योंकि इस, या फिर तुम चालू करो डिजायर से कि टॉप सेलिंग वो है, ऐसे आ और जाओ, डिसेंडिंग में लाते जाऊं। हाँ बट वो क्या होता है, वो प्रॉब्लम होता है तुमको हर बार वो एक्सेल में चेंज करना पड़ा है डिसेंडिंग में लाने के लिए, हम्म। तो उसे जब पाई में डाल दो ना, समझ जाएगा डिजायर से कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, किसका सबसे ज्यादा आता है, और वैसे भी ये सब का मतलब भी नहीं है, अदर्स डाल देते हैं इसमें, तो ऐसा है छोटे छोटे जो आते हैं अदर्स डाल दो, मेजरली तुमको क्या बताना है, डिजायर, बलेनो, ब्रीजा, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, यस सर। समझ रहे हो, दिस इज हाउ यू डू इट। ओके टाटा मोटर्स पे आओ। Tata Motors passenger vehicle sale rose significantly from 51,000 units to 66,000 units, registering a strong YOY growth of 29.1%. The domestic sales also witnessed a healthy increase, reaching 66,000 units, up 28.1% year on year. If we talk about the models, Tata Punch emerged as the top selling vehicle with 20,900 units, followed by Tata Nexon with 19,800 units. However, the Tata Curve experienced a sharp decline of 49.6%, with sales dropping to 1,600 units. The Tata Harriers saw a robust demand, recording a 125% YOY growth with 2,800 units sold. हाँ तो If अभी ये सब जो मैंने किया है ना, तो जैसे तुम्हारा यहाँ पे टाटा मोटर्स के तुमने बारे में लिख दिया, ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया, चार्ज डालो, टाटा पंच के बारे में लगा, टाटा पंच के चार्ज डालो, डोमेस्टिक है तो सेल्स भी तुमने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं लिखा है, फाइन, बट एक्सपोर्ट का मुझे यहाँ पे दिख रहा है चार्ट, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्डली इट कॉन्ट्रीब्यूट, अच्छा पहले तो सेल्स आएगा टोटल और फिर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी डोमेस्टिक कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तुमने बोला तो है डोमेस्टिक ऑल्सो विटनेस है हेल्दी इंक्रीजिंग 66%, अभी बट कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है डोमेस्टिक, तो वो क्या है, वो चार्ट में तुमको दिख जाएगा यहाँ पे टोटल सेल्स चार्ट, yes, sir. फिर वापस फिर उसके बाद डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, तो वो चार चार्ट डालो तुम कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में क्या हुआ, तो डोमेस्टिक ऑल्सो तुमको डोमेस्टिक ऑल्सो विटनेस है हेल्दी टीचिंग, so डोमेस्टिक ग्रोथ वाज लेड बाय मॉडल्स लाइक टाटा पंच, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, फोllowed by नेक्सन, हाँ ये तुम डाल सकते हो फिर यहाँ पे, तो एक चार्ट हो गया, फिर इसके बाद जब सेकंड आ गया तो तो ये पैराग्राफ हो गया सेकंड चार्ट के लिए, थर्ड जब सेगमेंट वाइज डालोगे सेगमेंट वाइज के लिए ये आ गया, ओके Yes, sir. ठीक है, क्योंकि सब लिख के फिर चार्ट नहीं डालना होता, ठीक है, Yes, sir. तो हाँ, तो सब में ऐसा ही करना कि तुमने चार्ट डाले हैं, एवरी चार्ट शुड हैव सम काइंड ऑफ ब्रीफिंग,
तुमको हर एक चार्ट प्रेजेंट करना होगा तो कैसे करोगे? और करने नहीं है तुमको हर चार्ट प्रेजेंट, क्विकली बताना है तुमको। तो इसके मैं जैसे भरत को बोला ना, एक तुम 2 मिनट का स्क्रिप्ट चैट जीपीटी पे डाल के लिख, पहले तुम बताओ कि तुमको प्रेजेंट क्या करना है, फिर ये ऐसा मैं प्रेजेंट करने का। जब जब चीजें मुझे प्रेजेंट करनी होने की, तो व्हाट आई टू डू इज, मैं पहले खुद लिख के लेता था कि मुझे क्या, अभी भी मैं ऐसा ही करता हूँ। अभी मुझे मुझे वीडियो वीडियो बनाना होता है तो मैं पहले मैं खुद लिख के लेता हूँ कि ये मुझे बात करनी है, अगर मुझे मेरे लैंग्वेज में बात करनी होती तो। एंड फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं चैट जीपीटी को, आजकल तो चैट जीपीटी है, मेरे टाइम नहीं था, तो हम फिर चैट जीपीटी को मैं बोलूंगा, अच्छा इसमें मुझे 2 मिनट का स्क्रिप्ट बना के दो जल्दी, मुझे क्या क्या जो जल्दी बताना है। हाँ, फिर अभी इसमें ऐसा होगा कि चैट जीपीटी तुमको थोड़े बहुत चीजें नहीं बताएगा, पर तुमको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए था वो उसमें, तो तुम ऐड कर सकते हो खुद से फिर। यस सर। सर ऐसा है। तो वो पहले, और फिर क्या होता है जब प्रेजेंट करो तो क्विकली प्रेजेंट करना होता है, बस हमको सिर्फ स्क्रॉल करना होता है, हमको सिर्फ स्क्रॉल करना होता है और कुछ नहीं। ओके, यस दिस इज हाउ यू प्रेजेंट। तो उसका क्या है, तुम एक दो बार प्रेजेंट, तो वैसे विद्यानंद को जब करते हो तो विद्यानंद को ऐसे प्रेजेंट करो, तो कि अगर उसमें कुछ इंग्लिश में चेंज हुआ तो वो बोलेगी कि इंग्लिश में कुछ बात करना है, कुछ अलग वर्ड डाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये ऐसा पहले प्रेजेंट करो, पहले करो। तुमने किया विद्यानंद को प्रेजेंट ये? नो मैम, नो सर। नहीं नहीं किया ना, हाँ तो स्टार्टिंग वाला किया था, अ, जब मैंने, अच्छा जब नंबर्स नहीं आए थे ना, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो क्या बोले विद्यानंद? क्रिस्प था और अच्छा था। अच्छा ओके, अच्छा अभी तुमने और एक्सपांड किया तो खराब हो गया। एक्चुअली में तो ये नंबर नहीं आए थे मॉडल्स अच्छा के ओके ओके ओके। तो मेक श्योर कि वो 2 मिनट में ही हो, विद्या के सामने भी कभी करोगे तो 2 मिनट में ही करना। आई थिंक मैंने भी सुना था तभी तो, अच्छा बताया तुमने, याद है मुझे, मैं था वो कॉल पे। यस सर। अभी क्या हो गया? तो वो थोड़ा, और जब भी बात करते हो ना तो थोड़ा फ्लुएंसी में बात करना है इंग्लिश में। ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सीखा फ्लुएंसी में बात करना, मुझे भी नहीं आने का। एक दो बार खुद ही प्रेजेंट करने का, अगर मुझे प्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा मैं क्विकली, 2 मिनट का टाइमर लगा के मैं सेट करने का। बट ठीक है, दो का फिर 2.3 मिनट हो गए तो चल जाता है। बट वो क्या है, जब 2 3 बार प्रेजेंट करते हैं तीसरे बार फिर अपने आप इजी हो जाता है। प्लस समझो तुम 2 बार खुद प्रेजेंट कर रहे हो, तीसरी बार विद्यान को कर रहे हो, चौथी बार मुझे कर रहे हो, तो फ्लुएंसी में तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुमको फिर डेटा पॉइंट बताऊंगा, प्रेजेंट कैसे करते, किधर क्या लिखते हैं, तुम अटकने नहीं चाहिए। बट तुम अगर फर्स्ट टाइम ही प्रेजेंट करोगे डायरेक्टली मेरे सामने, तो यस तुम अभी जैसे अटक रहे हो वैसे अटकोगे। यस सर। ओके, ऐसा है। और ये रन ये सब नहीं लिखते, ये रन यार, देखो वाई ऑन वाई लिखते हैं। उनको वर्ड जितने हो उतने, मतलब जो चीजें ये इजीली कर सकते हैं वो छोटे करने हैं उनको। यस सर। ओके भाई, भाई, तो एक बार करो, ये मुझे भेजो वापस, और ये हटा दो पहले, तो टेबल्स की तरह करो। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। यस सर। अच्छा, और इसमें देखो एक प्रॉब्लम था कि ये जो तुमने ना, ये राइट अलाइन नहीं है, मिडल अलाइंड है, क्योंकि अगर राइट अलाइन होता तो 421 इसी लाइन में आता। यस सर। समझ रहे हो? तो वो भी एक एरर है। फिर देखो ये मार्च, हाँ ये राइट अलाइन बराबर है, और ये तुम्हारे मिडल अलाइंड है। यस सर। ओके, और EV2 इधर लिखने की क्या जरूरत है, ईवी यहाँ पे लिख दो ना, यहाँ पे तो लिख सकते हो। हेडिंग, हेडिंग किधर है इसका, अभी देखो जिस ये चीज का हेडिंग किधर है, ये चीज का इंडस्ट्री सेल्स यूनिट इन थाउजेंड, सर ये तो वो, बराबर लगा, या ये बराबर है। अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिखो ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री, इसी का पार्ट होगा ना, वो 4 व्हीलर का ही पार्ट होगा, यस सर। है ना? तो फिर इसका किधर है, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स, हेडिंग, हर एक को हेडिंग होना चाहिए। ये भी वापस ऐसा क्यों आया है, ये 2 लाइन में क्यों क्यों चला गया? सर वो एक्सपेंड कर रहा था तो ये बाहर ही चले जा रहा था। हाँ, तो इसका फॉन्ट साइज कम कर देना। ठीक है। DOM2 फॉन्ट साइज का, फॉन्ट साइज बड़ा है। See, अभी यहाँ पे फॉन्ट साइज अलग है, यहाँ पे फॉन्ट साइज अलग है, यहाँ पे फॉन्ट साइज अलग है, सब जगह तुम्हारे फॉन्ट साइज अलग है। ठीक ओके सर। है, बहुत बहुत प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर टोटल करते हो, टोटल सी वो डार्क तो करना ही नहीं, पहले तो टेबल में डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट ऐसा होना चाहिए।
तो तुम्हारी जो डार्क है वो मुझे समझना चाहिए कि इट इज अ हेडिंग। फिर ये जो डार्क है मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा टोटल है, तो ये डार्क जो है, ये डार्क और ये डार्क अलग होगा, समझ रहे हो? Yes, sir. ये एक हेडिंग है और ये डार्क होगा, मुझे जैसे ये एकदम हाई डार्क होगा तो ये थोड़ा लो डार्क होगा, एंड फिर उसके बीच में लाइट लाइट कलर्स आते हैं। Yes, sir. ठीक है, मेरा भी रिपोर्ट देखो मैंने कैसे किया है वो, जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स मैंने डाले कोर्स मटेरियल में भी है। तो रिपोर्ट का फॉर्मेटिंग तुम फिर कुछ भी करो, फॉर्मेट अच्छा होगा तो यू विल बी अलाउड टू प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा होता है। अभी क्या हुआ, मैं लास्ट 2 लोग ने सीवीज दिए थे और उनके रिपोर्ट्स मैंने भेजे थे, बट क्या हुआ दैट उनका प्रेजेंटेशन खराब हो गया, ऐसा हो गया। बट सिलेक्ट लोग रिपोर्ट के बेस से हुए थे कि रिपोर्ट अच्छा था। Yes, sir. वो पर ठीक है, वो तो अलग बात है, अभी वो तो हर एक का पर्सनल होता है, बट सिलेक्शन की हुआ रिपोर्ट के बेस है। तो अगर मैं तुमको ये रिपोर्ट देख के प्रेजेंट करने को ही नहीं दिया तो मैं प्रेजेंटेशन किस काम का, ऐसा है। Yes, sir. ओके, फाइन। Okay. ये पहले थोड़ा रिफाइन करो, ठीक है, तो Yes, मंडे sir. को प्रेजेंट करना वापस। Sure. ठीक है, ओके, Okay, thank you. वेलकम करता हूँ। Sir, I have तुषार, also क्या मुकेश, सॉरी। I have also sent you the automobile report yesterday, so we can have a go through so I can present on Monday. If like the presentation error is there. Any. मुकेश, Hello. one second, let me see, Mukesh. Yeah. I've sent yesterday. It's not opening. I'll share my screen then. Yeah, okay, share your screen. Yeah. Well, send it again. Can you send the report again? It's not opening. Yeah, I'll send it again. Yeah. No, it's open. Fine, Mukesh is done. Again, Mukesh, in your report, same issues. Use dark color, Mukesh, on your report. Okay. One second, can you open your report? I'll tell you. Yeah, I'll open. Yeah. Yeah. Sir, I've opened it. Is my screen visible? Yeah, it's visible. Yeah. Yeah, see the problem. This is left aligned. It should be right aligned. Okay. Okay. Use dark colors. Don't use this light because it's already light and then you're going more light on it. Because this dark is different, this dark is different. Doesn't look good. Okay. That is why. So now remove this. Now, why have you put this? If you have done the report, to remove this, all borders. This is again a border. Remove this. Okay. Exhibit should have a line. Okay. And I have told line, and then you can put your own one line between. Understood. Okay. You can also put legends over here so that it will take up the space, nothing else. Because it is already in, so So domestic don't accounts put it for, over here. yeah. Don't put, why do you want to write domestic over here? Just write percentage over here, no? No, And it will legends be be right. easy to identify. So domestic accounts for 79%. So as I speak also, it will be like, this is No, so how the that is industry why share is. So the question is, it is not about presenting, it is about removing the blank spaces. And how are you supposed to fill this blank space? Understood. Okay, that is the reason you do that. So it is fine, the domestic 79 and next we can see from over here. Okay. Okay, now domestic breakup, domestic industry grew 2.2, seen. So here GST benefits, then you have to write, okay, once it is done, so which domestic or export, which have increased? That is also one point should come over here. Domestic and export, what has happened? The domain. Then fine, industry share. Achha, not industry share. First is always the bar chart. See now, when you write a report, so ideally bar and then your pie chart, bar and pie chart. Usually that is how the reports are made. Okay.
because when you make two pie charts, lots of blank spaces happens over here. That is the reason you don't make two pie charts at the same. It's always a bar chart and then a pie chart. But if I put the industry share as a bar chart, then no industry share. Then you have to put numbers. First industry numbers, then industry share. Okay. Now, Because let's say you on put this numbers as a bar chart, okay? 17.7% growth, okay? We'll put this over here, or you can put it for all 2, 3, 4-wheelers, and then domestic export, okay? Then domestic, what is the growth in domestic bar chart, and then their share, domestic and export. okay. Now this I am not sure domestic share breakup. How did you get domestic share breakup and export share breakup? Where do you get this number from? So the domestic share breakup I got is because I have every Hero MotoCorp, Bajaj, Maruti Suzuki, all the domestic numbers, and I just added all of them. So that is how the domestic share breakup is. Two-wheeler, three-wheelers, four-wheelers. No, one second. Where is CVs then over here? Commercial vehicles are not there. Okay. No, because your I missed commercial it. vehicles are Okay. there. So, and you cannot do like this directly, is because domestic Hero also sells three-wheelers. Sorry, Bajaj also sells three-wheelers. Export, so they have given export. Okay, domestic export number they have given. Yes. So they have given. So wherever the companies have given three-wheelers export or domestic, so I've taken the numbers accordingly and I've added them. It doesn't make sense because 70% is the total domestic share is export. And you know that majorly 97% is from domestic. So obviously this breakup and this breakup doesn't make sense. You see this? Almost the same. Okay. 2 the 77, 2 the 7. So it doesn't make sense. If the entire is India domestic focus. Okay, this data doesn't make sense. Domestic share. Okay, rather domestic. Is it gonna present? You don't know exactly which company have done it. So you need to find who has the highest share in exports. Okay. So I have given the share breakup as well in the below pages. So when I talk about industry, like here, like for domestic shares, so Bajaj Auto, how much is it? And below I have given for export as well. Domestic, okay, fine. So this will right when you are talking about two-wheelers. Yeah, two-wheelers I've given for four-wheeler as well. So two-wheeler domestic I've given below is the two-wheeler export, you will see. And then below that you will have four-wheeler domestic and four-wheeler export as well. Export, yeah. So this will come in charts. This will come in, sorry, bar charts. Okay. I'll change that. Okay. If you want table, it's fine. As of now, if you're not able to do, I think TVS, Bajaj, Hero, you will not able to do it exactly. This is fine. Okay, table. Then okay, make sure the table is still here. Sorry, the table is? Table should start from over here. See, because when you make reports, this you started from left, as it is when you write. This should start from right, the table. Okay. And the middle space is where you have to think that what you will do in the middle space. That is why we put a line and put that, do that. Okay, understood. Okay. Understood. Because this looks untidy. I don't know why it's over here. Why it is not aligning with your writing. And this should be aligned. Now you have not done this. Justified alignment. Everything should come in that phase. So it looks good. Looks good. Okay. Or else then add three pictures if you want. If you want to stretch like this, how you have done. This doesn't look bad because this you have entirely stretched it. Understood. Okay, I'll change it accordingly. Yeah. So if you have bar charts, okay. Fine, let me go through it then. I'm just talking about presentation. Okay, go ahead. Go down. So one more question I have. So in TVS Motor, I have exhibit 14, 15 and 16. So 16 one is below. That is fine or it should come up? 16 was below as I am getting. The table, so this exhibit 14 and 15, it is in line, right? So exhibit correct. Exhibit 9. Yes. With this line up. Why it is down. Okay. And see, major that is why I said put bar charts. Try to put some bar charts. Bar chart is better to understand than pie charts.
Pie chart is only for presentation. When you say TVS sales have increased, okay, what has increased? Domestic, okay. How much contributes from domestic? Okay. Okay, that is where your pie chart comes. Pie Okay. charts are not to be a go-through charts. It is only used when you have to present something. Okay. Bar charts can be put anywhere because bar charts are very easy to what do you say, understand. This is very difficult. See, the question is why are you talking about motorcycles over here? What is the growth in motorcycles? If motorcycles have not increased, then why are you writing this? So Okay. the motorcycles have grown by 18. So the next chart, Exhibit 16, shows 18.3%. 18.3%. So I will rather want what was it before, how the sales have increased, if it's like that. If you want, you can put, entirely you can put a motorcycle if you want, entire 12 months chart of motorcycle, and then you can show how it has increased. Or you can put quarterly numbers. So that is I prefer, if TVS you said you have to just talk about motorcycles, first see how the motorcycles have increased. And last month, then you can put that graph chart, year-on-year chart for that. That is why you should have 24 years of 24 months of number, and you can easily put year-on-year numbers. You can easily see what has happened. So that will look much better than this. Okay, I have the numbers, so then I'll make the changes. Make the changes. So always I said, bar chart is important. This is only for your presentation. If you think that that bar chart is important or this pie chart is important, then only you put it. Okay. So first preference should be bar chart, then next is pie chart. Next only now which pie charts. Now what you have to talk. If you're talking motorcycle, yes, then put a pie chart. If you're talking total numbers, then total numbers is domestic and exports only first. And then again, total numbers will, now how is total numbers will change? Total number is this is up. So I will rather want a motorcycle bar chart. I will rather want an EV bar chart, the scooter bar chart. Then you can put. Then you also will be able to present it much better. You will understand it much better. What has happened to the overall motorcycles? Okay, the volume has increased, decreased. Okay, that trend will be visible. That trend will be visible. Yes. Okay, got that. Okay. Fine. So prefer don't use pie charts. Use remove the pie charts. Use only. I have used bar charts, but it is in the wherever I got the March month numbers. So I have used it here. But yeah, I've used a percentage here, so I'll change that accordingly. Again, this also not in percentage. This also come in. Now this percentage should come in charts. Pie charts. This is fine. This is also okay, fine. If you have taken the descending order, it's totally fine. But the question is, now this is same. So when you're looking at the portfolio, okay, Thar contributes, so Scorpio contributes 40. So question is now how much this contributes. This is 20, 24.8. So when you see the bar chart, half of the pie is contributed by Thar and Scorpio. That is why the bar chart helps you. Okay, and you get the number as well, exact number as well. Yes. Okay. Yes. Okay. Yeah, that's it. So it's fine. yeah, This is fine. Make the this changes. Is actually fine. It is fine. Now don't it will take a lot of time to change this. This is fine. Keep this. Okay. So this actually looks good. Hatchback and this bar chart and batch category. Okay, got it. Okay. Got it. This Yeah, because actually here don't change it. I got the March month product numbers, so that's the reason I put it here. So You for could the have two-wheelers, yeah. If you don't have, you can at least put the top to total 5 years, or maybe I said full 12 months number. Okay, got it. Okay. All right. Or else the top 5 models which has been Top sold 5 the most. models. Yeah. Yes. Understood. Whatever you think. As a motorcycle, talk about motorcycles. And if you think motorcycles is important, so usually we put motorcycles, scooters, EVs, everything we put. Okay. Not to make it that expensive. Put. Okay, got that. Right. And in the EV also, I've added only Ether. So this is fine. Or fine, because iQube is covered in TVS, and Chetak must be covered in Bajaj. Bajaj, yes. So Yes. I've given below also the the growth year on year compared to the Ether as well. Fine. So when you make a report, okay, this is fine. Now again, why there is an empty space over here? Okay.
So either you put Okay. it in entire numbers from March to last March, that will fill up the space, and just put year on year for the last part, or else Okay. put a bar chart of it. Okay. Yeah, I'll Okay. make the relevant changes. Yes, I'll make them. Okay. Fine. Yeah, okay, guys, I think it's too late. Yeah, Tushar, anything you want to ask? Others सर can आई read. नीड टू सर मेरे को इन्वेस्टमेंट थीसिस का रिव्यू करवाना था। हाँ, देखा मैंने तुमने, बट वो पहले तो तुमने फिर रिपोर्ट का नाम ही नहीं लिखा है किसका है, फिर मैंने जाकर देखा चार्ट में कि वो टीवीएस का है। ये कौन लेके आ गया? टीवीएस का रिपोर्ट है वो। ओके हेडिंग दे दूँ ना? हाँ हाँ, पहले तो हेडिंग दी ना कि ओके टीवीएस का इन्वेस्टमेंट है। फिर तुमने ओके बाकी सब तो ठीक था। थिंक कुछ अच्छा, इसमें ना इन्वेस्टमेंट किसने बोला लिखने को? तो किसी ने बोला है लिखने को? हाँ सर मैंने एक्चुअली एक जगह अप्लाई कर रहा था ना, हाँ तो हाँ। उसने तो मेरे को रियलिटी का बोला था। बट हम्म मैंने बोला कि सर मैं रियलिटी तो ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन मतलब मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ उसके रिलेटेड मैं आपको बना के बेच सकता हूँ। हम्म। तो उन्होंने बोला भेजो, तो मैंने भेज आपसे दिया आपको एक्चुअली वो भेज। शायद वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी चला गया बीच में, फैमिली में इशू हो गया था इसके लिए वो फिर मैं कर नहीं पाया था। अच्छा, ओके हम्म, ओके। एक सेकंड। तो ये इसमें हेडिंग तो मतलब डाल सकते हो ना कि आई स्कूटर्स कैप्चरिंग एवरीडे मोबिलिटी, कुछ तो अट्रैक्टिव हेडिंग डाल सकते डेटा हो। ड्रिवन डालू क्या सर? डेटा ड्रिवन हेडिंग। हेडिंग मतलब एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, पूरा पूरा 2 लाइन का नहीं होना चाहिए कि ओके आई स्कूटर्स टू बी द नेक्स्ट ग्रोथ फैक्टर, प्रीमियम साइकिल्स सीइंग अ ट्रेंड, ऐसा कुछ। ओके ओके हाँ, ओके। ऐसा कुछ, हाँ। आई थिंक ई वो स्कूटर्स वाला के अच्छा लिए है ना मतलब सर, कौन सा? मोटरसाइकिल का, कौन सा? मोटरसाइकिल का प्रीमियम मोटरसाइकिल फर्स्ट वाला सर। एक सेकंड ना, दूसरा एक सेकंड। श्योर सर। हाँ तुषार, यस सॉरी सर। क्या बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रहा था कि प्रीमियम हेडिंग। मोटरसाइकिल 150 सीसी टू 200 सीसी स्वीट स्पॉट, ऐसा नहीं होना है। मैं पढ़ के खुश होना चाहिए हेडिंग, अरे वाह कुछ अच्छा लिखा है, पढ़ते हैं। अच्छा ओके सर, नोटेड। मतलब ऐसा कि स्टेटमेंट वाइज प्रीमियम मोटरसाइकिल्स टू लीव द 150 सीसी सेगमेंट, ठीक है। तो ओके तुम ओके। कंट्रीब्यूशन भी बता सकते हो कि इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा और सर ब्रैकेट में मैंने सब किया हुआ है, अच्छा ग्राफ किया है में। ना? हाँ, किधर? ग्राफ में नहीं, उधर ही ब्रैकेट में प्रीमियम मोटरसाइकिल्स अप्रोक्सीमेट, ऐसा लिखना अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ सेल्स, ऐसा एग्जांपल, टू लीड द ओके टू लीड द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। फिर आई ओके स्कूटर्स कैप्चरिंग एवरीडे, अभी ऐसा नहीं, स्काई में लिखा है, तुमको स्टेटमेंट पढ़ के समझना चाहिए कि लिखा क्या है। ओके सर, ठीक है, नोटेड। वो मतलब अगर चलो मैं को सिर्फ तुम्हारे 4 पॉइंट ही पढ़ने हैं, तो मैं क्या पढ़ूंगा? करेक्ट समझ। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, समझे? और सर मैंने ये फॉर्मेट फॉलो किया है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, हम्म, इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट दे दिया, मार्केट साइज दे दिया। हाँ। जैसे आप अगर प्रीमियम मोटरसाइकिल है ये पढ़ेंगे ना, मैंने हम्म 125 सीसी का पहले दिया, फिर 150 से 200 सीसी कितना कंट्रीब्यूट करता है ना, हम्म 15.4% है और कितना ग्रो हुआ है लास्ट ईयर से, हम्म वो कॉन्टेक्स्ट दे दिया। फिर उसमें मैंने टीवीएस का बताया कि टीवीएस का ये मार्केट शेयर है इतना, उसका बड़ा है। तो सर ये राइट कॉन्टेक्स्ट है कि इसमें कुछ या चेंज मतलब फ्लो में कुछ चेंज करना चाहिए? किसका बोल रहे हो तुम, कौन से इसका? मतलब सारे में ये फॉर्मेट किया मैंने, जो आप फर्स्ट भी अगर प्रीमियम हम्म मोटरसाइकिल का भी देखेंगे हम्म ना, तो फर्स्ट हम्म इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट दिया है कि हम्म 125 सीसी जो प्रीमियम मोटरसाइकिल है उसका क्या हम्म है, और उसमें हम्म से जो 150 से 200 सीसी जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसका हम्म कितना परसेंटेज है एज ऑफ टोटल मोटरसाइकिल ऑफ एज ऑफ FY 26। ओके। हम्म, देन सेकंड पैराग्राफ में बोला है कि टीवीएस का इतना शेयर है, इतना शेयर उसका बड़ा है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स है और अच्छा इसकी बताओ, वजह से हाँ। उसका बढ़ सकता है। बराबर, ठीक है, फाइन, लिखा अच्छा है, लिखा अच्छा है, नो डाउट इन दैट। मैं सिर्फ हेडिंग का था क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था ना, मैं ओके जैसे मैं कार में था और मैं तुम्हारा देखा, तो अभी मैं कार में समझा ऑब्वियसली मैं। सब तो नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा। यस। तो वो मुझे समझा नहीं, तो मैं लग सिर्फ ऐसा होता है कि यार फिर क्या पढ़ रहे हैं आगे, करेक्ट। ऐसा होता है। तो वो ऐसे बहुत बार होता है, मतलब जब भी तुम किसी को मेल करते हो ना, वो पहला कोई पता नहीं वो मीटिंग में होगा किस में होगा, तुम क्या करते हो? करेक्ट। तुम फिर वो कैसा है, वो सिर्फ हेडिंग पढ़ता है,
फिर अगर हेडिंग सच में अच्छा लगा तो आगे का पढ़ता है, ऐसा है। ओके ठीक है। ओके। ठीक है। और सर मैं आपको वीडियो देख रहा था इन्वेस्टमेंट का, 4 पॉइंट्स लिखा था सर, बट इसमें मैंने 5th पॉइंट ऐड किया, वो ऐड करना ठीक है। चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप देखिए ना एक बार। रेवेन्यू स्केल मा- अप एंड ऑपरेटिंग, हाँ चलेगा, ये चलेगा। 5th पॉइंट नहीं होगा, चलेगा वो ना? एक तुम्हारा एनालिसिस होता है एक्चुअली, वो पॉइंट पॉइंट नहीं होता है, तुम्हारा अच्छा, एनालिसिस होता एनालिसिस, है। ओके हाँ, तुम्हारा कि तुमने क्या नंबर्स पे क्या एनालिसिस किया है, कितना सब तुम्हें बोल तो ओके रहे हो, नंबर्स पे किधर इम्पैक्ट हो रहे हो। ओके ओके। तो ये एक एनालिसिस करके अच्छा, हेडिंग डाल ये दूं ना और लास्ट में। यूजुअली कैसे होता है, ये जो तुमने लिखा है ना, ये तुमने हिस्टोरिकल नहीं लिखना है, तुमको फ्यूचर में लिखना है क्या होगा। ओके ठीक है, क्योंकि ये तो वो पूछ ओके लेगा, क्योंकि ये वैसे भी हो चुका है ना, तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट थीसिस में कैसे पार्ट आएगा ये। ओके इन्वेस्टमेंट मतलब तो आगे फ्यूचर फोकास्टिंग होता है इन्वेस्टमेंट थीसिस। ओके। क्योंकि सर मैंने फिनेंशियल्स में है ना, अपडेट जो आप देखेंगे ना फर्स्ट में हम्म सेकंड टेबल लेफ्ट हाँ कॉर्नर पे, उसमें हाँ, फ्यूचर का डाला हुआ फ्यूचर है, का एफ आई डाला है, ट्वेंटी हाँ। सिक्स हम्म FY 27। तो फिर वो हाँ नहीं हटा दूं क्या, मतलब मेरे को बस हाँ, ऐसा था कि अपडेट करना था कि कितना क्या नहीं वो मार्जिन हटा और दो, वो हटा कंटिन्यूसली। दो, क्योंकि वो क्या होगा कि उसमें वो पूछेगा कि अरे क्या बताओ कैसे आया, अननेसेसरी अननेसेसरी मतलब, सब अच्छा ओके लेगा फिर ओके भी। अभी इसमें ना तुमने देखा है मार्जिन 15% पे डिक्लाइन हो रहा है 26 में, और फिर 16.2% हो रहा है, पूरा इतना कैसे 100 बेसिस पॉइंट कैसे बढ़ेगा, बताओ क्या किया तुमने, क्या रीजन की वजह से 100 बेसिस सॉरी, पॉइंट बढ़ेगा। ये सर एबिटा मार्जिन ना सर। तो हाँ इस बार सर ऐसा था, मैंने जो FY 26 का ऐसा फोरकास्ट किया था, गिवन द लास्ट 3 क्वार्टर्स हाँ, कैसा नहीं होता, और इसके जो लिए, इसके लिए वो हाँ भाई आप। स्टार्टिंग में नहीं करना है ये सब चीजें। ओके तुम थोड़ी तुमको तुम्हारे मॉडल प्रेजेंट करने जा रहे हो, तुम तुम्हारे प्रेजेंटेशन मतलब तुम खुद को प्रेजेंट करने जा रहे हो, फिर अननेसेसरी ओके ऐसे चीजों में मत जाओ जिसपे कोई है ही नहीं, मतलब दिस इज नथिंग टू डू। तो तुम तुम्हारे एनालिसिस में ये लिख दो कि मैं मुझे लगता है ऐसा होगा वैसा होगा। जो 5th पॉइंट है ना तुमने, कि सेल्स शुड हाँ इंक्रीज 10%, या मार्केट शेयर इतना ओके है तो टीवीएस इतना मार्केट शेयर ले सकता है, ऐसा वैसा। ओके तो वो हिस्टोरिकल लिखने, इसके लिए वो 5th पॉइंट लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है क्या हुआ है ओके फ्यूचर में, कि ओके ऐसा ओके। है तो तो ऐसा है कि यू कैन इंक्रीज, मार्जिन कैन इंक्रीज, हिस्टोरिकल इतना था तो आगे कितना हो सकता है। Okay. ये सर इसमें और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि ईवी का इनका एबिटा मार्जिन ये क्वार्टर में Q3 FY 26 था ना, हाँ उसमें एबिटा मार्जिन पॉजिटिव हुआ है, तो FY 27 थ्रू आउट द क्वार्टर उनका हाँ, मार्जिन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो हाँ जाएगा। तो ये सब तुम लिख सकते हो, यस दशा क्यों एनालिसिस होगा, राइट। हाँ एनालिसिस, हाँ यस सर। फ्यूचर एनालिसिस की अभी इतना है, अभी आगे क्या होगा। ओके तो तुमने बोला प्रीवियस कंपनी रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q4 रेवेन्यू, FY 25 एबिटा मार्जिन ग्रो फास्टर, फाइन। या फिर तुम ऐसा लगता है कि एबिट इतना ऐसा हुआ है, अभी आगे क्या होगा। ओके। ठीक है। यस सर, ठीक है। गॉट इट। और सर लास्ट पॉइंट, जो हम्म, वैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज किया ना, जैसे हम्म, अपना बात होता है ईवी बाय एबिटा हाँ यूज करते हैं राइट। हाँ हाँ बी करंटली 23.7x पे ट्रेड करा था, और बट मैंने हम्म। जो मल्टीपल लिया वो लोअर लिया है कि नहीं, एवरेज, तो वो सही अप्रोच है कि उसको मतलब एवरेज, ज्यादा लेना हाँ चाहिए ठीक है। मल्टीपल। नहीं एवरेज अभी कैसा है, एवरेज लो रहे तो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से एवरेज लेते हैं। अभी वो पूछेगा ये कैसे आया, 22 कैसे आया। तो ये एवरेज है लास्ट 3 इयर्स एवरेज है, का। हाँ तो लास्ट 3 इयर्स का, तो अभी तो तुम बोल रहे हो कि ज्यादा ग्रोथ हो रहा है कंपनी में, ऐसा भी तो हो सकता है, फ्यूचर इज यस यस, पास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट करेक्ट। फ्यूचर। तो यूजुअली कैसा होता है, अभी ये देखो, अभी जो करंट चल रहा है ना, तो कैसे होता है अभी, इफ यू वांट टू प्रेजेंट इट इन वैल्यूएशन, तो अभी ये 23 इबिडा है बराबर, इबिडा 23 है, तो इसका देख लेना यस सर। हिस्टोरिकली इबिडा ग्रोथ कितना हुआ है। ठीक है, अगर 20% है और ये 23 है, तो उसको कितना फैक्टर है, 0.1 का फैक्टर है एग्जाम्पल। ओके मतलब समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, 15% से ग्रो हो रहा है, और चलो इसको ना EBITDA 30 का मिल रहा है, तो क्या हो गया उसका फैक्टर ऐसा क्यों मिल रहा है 30, क्योंकि उसको 2 टाइम्स ज्यादा फैक्टर मिल रहा है। क्यों ऐसा, ओके। बिकॉज ऑफ उसका ब्रांड प्रेजेंस अच्छा है, बड़ा कंपनी है, मार्जिन स्टेबल है, ROC प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रांग है। प्रॉफिट स्ट्रांग है, तो इसके लिए वो तुमको उतना फैक्टर मिलता है। ठीक है, तो ये ओके। हिस्टोरिकल तुम चेक करो, जो भी तुम देख रहे हो हिस्टोरिकल नंबर, और अभी तुम्हारा ग्रोथ एबिटा डालो इसमें, चेक करो ना एबिडा सर। का, हाँ एबिडा का, और अभी एबिटा तुम्हारा ग्रोथ। ग्रोथ डालो इसमें, हाँ। ओके। मतलब एग्जांपल अभी तुमने ये लिया ना 23, अज्यूमिंग 30 होता है, ठीक है, हम्म। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल ओके। हो रहा है, और मैं बोलता हूँ EBITDA सिर्फ 15% से ग्रो हुआ है लास्ट 5 साल में। ओके, करेक्ट। तो 5 साल में 15% ग्रो है, फिर भी इसको 30 का EV बाय EBITDA मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ द ग्रोथ, 2x। 2x। करेक्ट अभी तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि सर मेरा EBITDA 20% से ग्रो होगा, तुम्हारा फोकस्टिंग है, ठीक है, करेक्ट। तो नाउ इंटू 2, दैट इज 40। 40, हाँ तो तुम्हारा EBITDA EV बाय EBITDA 40 होना चाहिए, दिस इज हाउ यू जस्टिफाई, ओके। यस सर। समझ रहे हो।
Oh, nice. नया दिस इज पर्सपेक्टिव है दिस इज अ वे ऑफ सर। जस्टिफाइंग इट। ओके। ओके, अगर जस्टिफाई करना ही है तो, क्योंकि इस पे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे इतना क्यों लिया, और ये ऐसा ना कभी 22.3 नहीं होता है सर, अप्रोक्सीमेट 23 ऐसा होता है। अप्रोक्स ओके सर। हाँ, कभी वो पॉइंट नहीं डालता ओके है, ठीक है, ओके क्योंकि नंबर ऐसा ओके सर। स्पेसिफिक नहीं होता ना कि 22.3 इसको मिलेगा। तुम क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, मतलब तुमको अगर करेक्ट मुझे सैलरी देना है तो थोड़ी मैं बोलूंगा कि तुम्हारा सैलरी मैं 30.2% से इंक्रीज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगा ना, मोटा मोटा नंबर होता है करेक्ट। ऐसा। ठीक है। यस सर। और सर अभी बहुत सारे है ना बोले 2 पेज तक लिमिट करने का, अभी इन्वेस्टमेंट थीसिस इतना ही रखने का कि कंपनी के नहीं, बारे में और नीचे डिस्क्राइब करना है सर? कंपनी के चाहिए तो बाद में लिख दो अबाउट द कंपनी, नीचे क्या करते हैं, चार्ट विट चाहिए तो डाल सकते हो, जो हमने बनाया ना कंपनी प्रोफाइल वैसे तुम बना अबाउट सकते हो। प्रोफाइल राइट हाँ, राइट राइट प्रोफाइल राइट। प्रोफाइल, हाँ हाँ, वो बेटर लगता है, अच्छा किया रे, चलो इसने अच्छा और कुछ किया है, बिकॉज सिर्फ इन्वेस्टमेंट ओके थीसिस आजकल एआई भी लिख देता है। ओके तो तुम्हारे जो नंबर्स है ना, तुमने चार्ट नंबर वाइज, मतलब वॉल्यूम वाइज नंबर, वो भी तुम डाल सकते हो सब। सर देखो मैं वॉल्यूम वाइज भी देखता हूँ कंपनी का, देखा पाइफर मोटरसाइकिल कितने बिके, स्कूटर्स कितने बिके, डोमेस्टिक कितना है, वो तुम नीचे कंपनी प्रोफाइल में डाल सकते हो। ओके ठीक है, ओके सर। ऐसा है हाँ। चलेगा सर। तो इन्वेस्टमेंट थैंक यू। लिख देने का 2 पेज, और फिर उसके बाद कंपनी प्रोफाइल, तो वो अलग ही हो जाएगा ओके पूरा। ओके 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 और नोटेड। फॉर्मेट में डालोगे तो क्या है, मैं भी अगर देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अरे वाह इसने और कुछ किया है, ओके कंपनी समझा इसने। ओके। ओके। एक्चुअली सर जो मैंने सीवी आपको भेजा ना, उसमें हम्म, मैंने ना जो लिंक अटैच किया उसमें कंपनी प्रोफाइल्स भी अटैच किए हुए हैं, मॉडल्स भी अटैच किए हैं, रिपोर्ट्स भी अटैच किए हुए हैं। किसमें, तो सीवी में ना, जो हाँ, सीवी सीवी मैंने में, जो हाँ हाँ, लिंक लिंक गूगल ड्राइव भेजा, का हाँ लिंक अटैच हाँ किया तो देखा, इसको हाँ भी इन्वेस्टमेंट थीसिस के नीचे ऐड करूँ ना सर? हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट से ओके ऐड कर सर। देना। क्योंकि चलेगा तुम सर। कंपनी प्रोफाइल से इन्वेस्टमेंट बनता है ना, ऐसा है। यस यस यस। ठीक ओके है, अच्छा नोटेड। किया है, ठीक है। और सर सीवी में कुछ चेंज करने जैसा है? सीवी में नहीं, जो भी लिखा है उसे प्रेजेंट करो, और कुछ नहीं, आर के एडवाइजरी का। ओके सर। हम्म। मैं ओके। एनआईएसएम का एग्जाम क्यों नहीं किया, वो तो देखे रखो ना, काम में आएगा कभी तो। रिसर्च एनआईएसएम का कौन एनालिस्ट सा वाला, करूँ सर? रिसर्च एनालिस्ट वाला, रिसर्च मैंडेटरी एंड। होता है ऐसे, कभी कभी मैंडेटरी होता है साइड पे। अच्छा मैं ठीक है दे देता हूँ। हाँ, इजी रहता है ऐसा, कुछ देखे फिर अभी टेक्निकल ऐड हुआ है, कुछ गवर्नेंस ऐड हुआ है, वही पर पढ़ लेना। कौन सा बोल रहे हो सर, मैं नोट कर देता हूँ। नहीं नहीं, वही रिसर्च एनालिस्ट के इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस ऐड हुआ है जो सीएफए में नहीं होता है, और तुम्हारा ओके एक गवर्नेंस है, वो एक चीज है जो सीएफए में नहीं होती, बाकी तो इजी होता है। ओके। एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट है सर राइट? हाँ हाँ, वो देखे रखना क्योंकि ओके वो सर। मैंडेटरी होता है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। एंड सर जस्ट लास्ट अपडेट, आपने वो हाँ यूएस सिक्योरिटीज का बोला था ना, हाँ कैन आई हाँ शेयर? बोलूँ क्या सर अभी हाँ, तो? बोलो बोलो, हाँ क्या हुआ सर उसमें। उनका कुछ आया नहीं कॉल। अच्छा, अरे हाँ, अरे वो उसका ना, उसके जो लीड को ना कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गया था, अच्छा ओके वो उसने फिर वापस मेरे को रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, मैं पूछता उसको। ओके। अच्छा हम्म, इनके सर आप रेज्यूम शेयर करें, जो आपको मैंने अपडेटेड करके भेजा है ना हाँ वही वही शेयर करना, करो। मतलब उसमें सब मैंने प्रॉपर अपडेट कर दिया, आपने जो ठीक है चेंजेस करने बोला था ना वो ठीक भी है कर लिया था। ठीक है ओके सर। ठीक है। और सर मैं अभी आपको एथर का लास्ट 4 कॉल्स का अपडेट करके भेजता हूँ, कौन चलेगा, कॉल का। चलेगा चलेगा। ओके सर थैंक यू। ओके। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। बाय सर।